Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very fresh and beautiful good morning to all of you. DTTLP मानू की जानिब से मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। हिंदुस्तान में तकनीकी तालीम का मजमूई तालीम निज़ाम में एक बड़ा हिस्सा और अहम रोल रहा है और हमारे मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इसका एक अहम किरदार भी है, जिसके पेश नज़र तर्जुमे का ये अहम काम किया जा रहा है और हमारी खुशनसीबी है कि हम उसका एक हिस्सा हैं और आज यहाँ इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जमा हुए हैं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डाइस पर प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब OSD डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को दावत देना चाहती हूँ। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब। उसके बाद मैं डायरेक्टर AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग एकेडमी डॉक्टर दिनेश साहब को डाइस पर दावत देना चाहती हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशिर जफर साहब डायरेक्टर DTTLP डाइस पर तशरीफ ले आए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन सैयद महमूद काजमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डाइस पर मौजूद हैं। कन्वीनर ऑफ द वर्कशॉप डॉक्टर असलम परवेज साहब को डाइस पर मदऊ किया जाता है। प्रोग्राम के आगाज में हम आपके सामने हमारी यूनिवर्सिटी का तराना पेश करते हैं। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है। ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। कलाम सारे है दर्ज रूह में, कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तालीम का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करते हैं, सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान। जो दाना गुजरे थे इस ज़मीन से, जो दाना गुजरे थे इस ज़मीन से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ के, हमारे कद ऊंचे हो गए हैं। हम चांद की पेशानी जब छू के निकलते हैं, कायनात में है पाँव और मार्ग पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू।
प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर ज़फ़र साहब, डायरेक्टर DTTLP को इफ्तिताही कलमात के लिए डाइस पर दावत देना चाहती हूँ एक शेर के ज़रिए कि दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिलनशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि आज इस महफिल को सजाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया और ये महफिल बेहतरीन एकेडमिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स और उर्दू बैकग्राउंड के इंजीनियर्स के साथ आरास्ता है। हमारी इस महफिल में मैं प्रोफेसर सैयद आइनुल हसन साहब शेखुल जामिया के नुमाइंदे, प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब OSD डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और ये इतला आपको देता हूं कि वाइस चांसलर साहब कुछ देर में तशरीफ ला रहे हैं। कल उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया और अभी अभी वो सुबह पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह वो अपने वक्त पर हमें मुखातब करेंगे और उन्होंने प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब से इस्तदा की थी कि वो उस वक्त तक नुमाइंदगी करें। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ सर। दिल्ली से तशरीफ लाए हमारी इस महफिल के रूह रवां डॉक्टर दिनेश सिंह जी, जो AICTE के शोबे के जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही नर्म गुफ्तार और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो टेकअप किए हुए हैं और उर्दू के हवाले से सेकेंड ईयर की जो किताबें हैं, तकरीबन 88 किताबें, उनके प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इन पर है और वो हमारे दरमियान यहाँ पर पर्सनली आए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी साहब सदर शोबे तर्जुमा और डॉक्टर असलम परवेज साहब DTTLP के सीनियर ट्रांसलेटर जो आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। महफिल में हमारे पास बड़े लोग मौजूद हैं, मुझे जिनके नाम मालूम है एक दो नाम लूँगा, बाकी तमाम हजरात जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे लिए। आज की इस महफिल में हमारे दरमियान हमारे हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत के लिए प्रोफेसर सज्जाद लोन साहब कश्मीर से यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और कारपोरेट से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे कई साथी यहाँ पर हैं, सदाकत हैं, इरफान हैं और फसीउल्लाह हैं। ये सब लोग हमारी एक दावत पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। ये सारे लोग जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, गुज़िश्ता 2 महीने की हमारी कोशिशों का नतीजा है और ये कोशिशें जारी हैं। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 35 to 40 ट्रांसलेटर्स को हमने इनवाइट किया था जो बाहर के हैं और माशाल्लाह उनमें से 60% लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। बाकी हजरात का भी जो है ना हमारे पास, बाकी हजरात का भी हमारे पास डाटा है और उनके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द महफिलें सजेंगी। इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स न सिर्फ ये कि हैदराबाद बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र और कश्मीर में पेश नज़र है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि एक पूरा पूल तैयार हो जाए। आगे की यानी गुफ्तगू में मैं आपके सामने इस पूरे प्रोजेक्ट की तफसील भी रखता हूँ। शोबे तर्जुमा के तमाम असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अहमद साहब, डॉक्टर कहकशां लतीफ़ साहिबा और हमारे DTTLP की 2 मज़ीद शख्सियात जनाब डॉक्टर सादी अरशद साहब और डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब, इन सभी की मेहनतों के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। आज की महफिल में मैं डॉक्टर सैयद माजिद अली का भी तज़किरा ज़रूरी महसूस करता हूँ, जो आप सभी हजरात से मुस्तकिल टच में रहे, लेकिन इत्तेफाक से उनके वालिद का आज ऑपरेशन है और वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। तो मैं आप सब हजरात का दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूँ और इस बात की कोशिश करें आप लोग
कि शाम तक का प्रोग्राम है, इंटरेक्शन जितने हों वो हम करेंगे। हमारी इस महफिल के अंदर कुछ अहम मेहमान ऑनलाइन एड्रेस करने वाले हैं, जिसमें AICTE के एडवाइजर 1 हेडक्वार्टर नई दिल्ली से डॉक्टर ममता आर अग्रवाल और प्रोफेसर राजीव कुमार जो ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी AICTE हैं, वो हमारे इन पहले 2 सेशंस के अंदर एड्रेस करेंगे। और उसके बाद दोपहर में AICTE बुक्स के सिलसिले में एक वर्कशॉप होगा बादाब्ता, जिसमें डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब और डॉक्टर असलम परवेज साहब आपको छोटी मोटी जो गाइडलाइंस हो सकती हैं, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, वो देंगे। और दोपहर का सेशन जो होगा इंशाल्लाह DTTLP में होगा। हमने इस बात की कोशिश की कि ये प्रोग्राम तो आपको ऑडिटोरियम में हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्टरेट है वहाँ पर आपको फिजिकली हम ले जाएं और आप यानी फ्रॉम द स्क्रैच जो डायरेक्टरेट का डेवलपमेंट हो रहा है उसको अपनी नज़रों से देखें। आप सबका इस महफिल के अंदर इस्तकबाल है, तहे दिल से इस्तकबाल है। वो तमाम लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाने में हमारा ताउन किया है, हमारी यूनिवर्सिटी के और AICTE के, जिनके कई लोगों के नाम रहमान साहब जैसे खास तौर पर हैं जो हमारे साथ मुस्तकिल टच में है AICTE के, और यूनिवर्सिटी के हमारे नवीद हैं और दीगर अमला है हमारा, ये सभी लोगों के ताउन के साथ ये महफिल हो रही है। हम इन तमाम का इस्तकबाल करते हैं और IMC का शुक्रिया और इस्तकबाल मैं करता हूं कि आज शकील भाई और उनकी टीम अगर यहाँ नहीं होती तो शायद हम ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं वो हो नहीं पाता था। लिहाजा डायरेक्टर ऑफ IMC और उनकी पूरी टीम बतौर खास शकील साहब और उनके साथ जो लोग आए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और इन तमाम का विषयों के पीछे हमारा जो जज्बा है वो यही है कि उर्दू टेक्नोलॉजी की, उर्दू इल्म की, उर्दू मालूमात की, उर्दू नई दुनिया की, उर्दू 21वीं सदी की एक ज़बरदस्त ज़बान बनकर उभरे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। जी, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तारुफी सेशन की तरफ जाते हैं। जो शुरका मुतरजमीन हैं वो यहाँ बारी बारी आकर अपना तारुफ कराएं। माइक है ना? मोबाइल माइक अगर हो तो वहीं दे दो। अच्छा ठीक है, आप लोग तेज रफ्तारी से आए, अपना मुख्तसर तारुफ कराएं ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो जाए। सही सर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूबुल हक है और मैं फ़िलहाल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है बेंगलोर में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इससे पहले मेरी एक किताब यही DTP की जानिब से शाया हो चुकी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से। जी थैंक यू। डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद मेरा नाम है। मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबों का तर्जुमा करते रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जमील अहमद है। मेरा ताल्लुक शुबा कंप्यूटर साइंस मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है और मैं यहाँ करीब 8 सालों से डिपार्टमेंट में हूँ। और मैं इस बार कुछ कम्युनिकेशन की किताबों पे जो है तर्जुमा का काम मैंने स्टार्ट किया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर सज्जाद अहमद लोन है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एज प्रोफेसर काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में नेचुरल साइंस की तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और गुज़िश्ता 20-22 वर्षों से तर्जुमे के काम से भी वाबस्ता रहा हूँ। शुक्रिया।
पीछे की रो से लोग आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहा मोहम्मद है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मेरी इंजीनियरिंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एमटेक मैंने यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया से करा है। नाम सदाकत मुल्ला, मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और टीचिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब्दुल मोमिन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, बेंगलुरु में रहता हूँ। उर्दू मीडियम से तालीम हुई है और एक वॉलंटरी वेबसाइट teachinurdu.org उसका वॉलंटियर हूँ और उस पर मुख्तलिफ किस्म के तराजुम मैं करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान अहमद है। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में पीएचडी किया है। अभी मैं एक कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें मैं ग्लोबलाइजेशन प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन देख रहा हूँ, और इसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर पेटेंट भी फाइल किया है जिसमें हम आरटीएल लैंग्वेजेस और इंग्लिश जो लेफ्ट टू राइट लिखे जाती है उनको कैसे एक साथ वो कर सकते हैं, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वर्ल्ड्स की टेक्नोलॉजी जाइंट्स यूज़ कर रही हैं, जो डीटीपी में यूज़ होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्बास है। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल और पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया है, और करंटली मैं वैनिक लेसन एसोसिएट में सीनियर रिसर्च एसोसिएट की हैसियत से काम कर रहा हूँ अकूस्टिक इंजीनियरिंग में। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। बैकअप में कुछ लोग आगे आते जाएं ताकि वक्त हमारा बचे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अख्तर है। मैं धुले महाराष्ट्र से हूँ और वहाँ पर SVKM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक कॉलेज है, SVKM मुंबई की संस्था है, उसका जो कॉलेज है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बशीरुद्दीन हूँ। मैं जो है आचार्य इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के हैसियत से वाबस्ता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरी 3 किताबें मानू के ज़ेर एहतमाम शाये हो चुकी हैं, जिनमें से एक किताब तो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसलेशन के ज़ेर एहतमाम है और 2 किताबें डिस्टेंस एजुकेशन के तहत शाये हुई हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हक फरखद है। मैं कंप्यूटर साइंस में पीएचडी किया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से डाटा माइनिंग में, और ये तर्जुमे का मेरा डॉक्टर खालिद के साथ पहला तजुर्बा है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद दानिश यूनुस, मुंबई में रहाइश है मेरी, और मैं तकरीबन 10 साल से अंजुमन इस्लाम अब्दुल रज़ाक कालसेगर पॉलिटेक्निक मुंबई में एज अ सीनियर लेक्चरर काम कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मिन्नतुल्लाह सिद्दीकी लखनऊ से, मैं नदे में पढ़ा रहा हूँ, और ट्रांसलेशन का जो एक्सपीरियंस मेरा पिछले साल से है, जो प्रोफेशनली तौर पर, वरना इससे पहले भी ट्रांसलेशन करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद खान है। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से अपनी तालीम मुकम्मल किया हूँ। अभी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ RGO की TTTLP जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अभी काम कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल मलिक निज़ामी, नांदेड़ महाराष्ट्र से। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की MSCRT और दीगर जो शोबे हैं वहाँ पर तकरीबन 20 साल से ट्रांसलेशन का काम करता हूँ। मेरी मुख्तलिफ बच्चों की और असातिज़ा के तालीम और तरबियत के सिलसिले में कुछ किताबें शाये हुई, और मैं एक माहाना रिसाला निकालता हूँ ऑनलाइन जिसका नाम तालीम और तरबियत।
जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खान हसनैन आतिफ, जे आज़ाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन में लेक्चरर हूँ। पिछले 25 साल से तदरीसी तजुर्बा है, 20 साल से तर्जुमे के इसमें काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट की जो दरसी किताबें हैं उसके तर्जुमे भी मैंने किए हैं। फ़न तर्जुमा निगारी ICM यूनिवर्सिटी में BA फाइनल में मेरी लिखी हुई किताब पढ़ाई जाती है और मैंने एक इस्तिलाह माकुस तर्जुमा निगारी यानी रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन की इस्तिलाह मैंने वज़ा की है और उस पर पिछले कई सालों से काम भी हो रहा है। कई यूनिवर्सिटीज़ में उस पर रिसर्च वर्क भी चल रहा है। Assalamu alaikum. Myself Mohammad Sajid. I am a visiting lecturer at the Government Polytechnic Khamga. I completed my graduation in mechanical engineering. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और मेरा क्वालिफ़िकेशन MSc MAd है। मैं अंजुमन जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ और हमारी खुद का एक पर्सनल कोचिंग क्लास है जहाँ पर हम नीट और JEE क्लासेस को चलाते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने हम लोगों को खैर मकदम किया है, हमारे खाने का और रहने का इंतज़ाम किया है, उसके लिए जज़ाकल्लाह सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसीब खान है। मैं मुफ़ख्खम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हेड की तरह अपना काम को अंजाम दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर इरफान वहीद दिल्ली से आया हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD उर्दू में किया है और BE सिविल इंजीनियर भी हूँ। पिछले 20 साल से तर्जुमे से वाबस्ता हूँ। 5 साल मैंने पार्लियामेंट में राज्यसभा में एज एन इंटरप्रेटर काम किया, साइमल्टेनियस इंटरप्रेटर उर्दू के लिए। इसके अलावा IIT मद्रास में उर्दू का एक AI सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम SM फसीउल्लाह है। मैं तकरीबन 10-12 साल से ट्रांसलेशन की दुनिया में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरी 7 किताबें ट्रांसलेटेड छप चुकी है और मैंने कई एक अफसाने वगैरह भी ट्रांसलेट किए हैं। उसमें से हाल ही में एक अफसाना साहित्य अकेडमी के इंडियन लिटरेचर जर्नल में छपा है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दीगर जर्नल्स वगैरह में छपे हैं। और उसके अलावा मैंने करिकुलम डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे लेवल पे BA और MA के लिए मैंने चैप्टर्स लिखे हैं। और यहाँ के 2 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके भी मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कोर्सेज को ट्रांसलेट किया है, वो भी छप के आ चुके हैं। और उसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में और साथ ही PhD कर रहा हूँ मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट मानून से। यही कुछ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद हारिस हूँ और मैंने जामिया से PhD की है और अभी एक दिल्ली में एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और प्रोफेशनल ट्रांसलेशन में मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 3 साल का है। थैंक यू। एक्चुअली NTA जो एग्जामिनेशंस कराता है उसमें टेक्निकल ट्रांसलेशन में मैं हूँ और ठीक है, और ज़्यादा तो उसकी तफसील नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है। बाकी उसमें मुसलसल 3 साल से मैं हूँ और ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा निगार है। मैंने जामिया से BTech और MTech किया है और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में PhD कर रही हूँ और मैं पिछले 8 साल से जामिया पॉलीटेक्निक में पढ़ा भी रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असरुद्दीन, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब खुलदाबाद में सीबीएसई का एक रिहायशी इदारा है अल इरफान स्कूल। मैं उसमें प्रिंसिपल की हैसियत से अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ और तकरीबन 4 साल कबल पेंडेमिक से पहले एक किताब का तर्जुमा किया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हबीबुद्दीन है। मैं मुंबई से हूँ। इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए किताब का ट्रांसलेशन कर चुका हूँ और फिलहाल असिस्टेंट टीचर की हैसियत से मुंबई में हाई स्कूल टीचर हूँ और INUP के इश्तराक से IIT मुंबई INUP के इश्तराक से MSc फिजिक्स में PhD कर रहा हूँ। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अर्शिया आजम हूँ, मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा नाम इस्मत फातिमा है। मैं इसी यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खदीजा साजदा खानम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कटक कैंपस से हूँ। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, इसी फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और स्वयं के लेक्चर्स को ट्रांसलेट करती हूँ उर्दू में NPTELs के, और अपना भी कुछ काम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में है उसको भी उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ। यहाँ के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट के ज़फ़र साहब, सारे दिग्गज जितने भी अफराद हैं सारे बहुत मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी इसके लिए सिलेक्शन में जज़ाकल्लाह। जी, जावेद इकबाल नाम है। तकरीबन 7-8 साल से तर्जुमा निगारी और तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। फ़िलहाल इसी काम में मसरूफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और कुछ लोग नासिया कम आइए। क्यों आप लोग ठहरे? मजीद जो ट्रांसलेटर्स पीछे हैं वो आगे आ जाए, जो लोग नहीं कराए। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नासिया मनियार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BEd भी कंप्लीट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बुशरा रहमान है और मैं जामिया सलाहत रामपुर से आलिमा फाजिला हूँ और यहाँ मानू में MA ट्रांसलेशन स्टडीज़ फाइनल ईयर में हूँ। और इससे पहले मैं बहरीन में थी और काफ़ी अर्से तक वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ट्रांसलेशन में काम किया है, और अभी यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर के निगरानी में इस डिपार्टमेंट में भी हिस्सा ले रही हूँ। अब मैं प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब से अदबन इल्तमास करती हूँ कि वो डॉक्टर दिनेश साहब को बुके के ज़रिए से उनका इस्तकबाल करें। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि तर्जुमे की फील्ड के बड़े लोग आज यहाँ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर दिनेश साहब का डाइस पर इस्तकबाल करती हूँ इस शेर के साथ कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं ज़माने से, मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ।
Assalamu alaikum. Namaskar. Very good morning to our Honorable Vice Chancellor, Professor Syed Anil Hasanji, in his absentia, Professor Siddiqui Mohammad Mahmood ji, OSD and Dean, School of Education and Learning, Professor Muhammad Khalid Jafar ji, Coordinator of this program and the Director of DTTLP, Dr. Aslam Parvez ji, Co-Coordinator, and Dr. S. Mahmood Kazimi, HOD of your university, and all the distinguished academicians present here in the auditorium and also who have joined us in the online mode. Very warm good morning to our visionary leader, Honorable Member Secretary AICTE, Professor Rajiv Kumar ji, respected Mamta Agarwal ji, Advisor 1 and Bureau Head of Atal Cell, who is conducting all this translation work in AICTE. First of all, on behalf of AICTE, I express my heartfelt gratitude to Honorable Vice Chancellor Sir and Coordinator Sir for accepting our request to be the maiden university. It's the first one university, only and only university for translating and reviewing of engineering books into Urdu language for first year and second year. As we all aware that higher education is passing through a transformation phase, and National Education Policy, NEP 2020, is the lighthouse of this transformation. NEP 2020 lays emphasis on providing education especially in mother tongue or regional languages to our students. Apart from technical skills, our students need new skills to acquire new skills like high order thinking, creative and critical thinking, teamwork and collaboration, emotional intelligence, cognitive flexibility, and much more. These skills can be inculcated more effectively into them by imparting the education in our mother tongue or in our regional languages. You can feel the differences when you teach them in our regional language or in the mother tongue. Because we should teach them in our mother tongue because it gives strong foothold on conceptual based education, outcome based education, and by imparting education in mother tongue, the learning ability and their capability enhanced manifold. Multiple times they enhance their conceptual based education. Students can communicate well, they can communicate very well in their classes without any shy, and increase their core competency, studying in native language, improves the higher attendance. Because what we have seen, you have also observed that when we are imparting the education in other languages, the attendance is very poor. So that it can increase the higher attendance also, it can improve our result also, it can improve the employability for the students. It imbibes the motivation, increase confidence for asking queries in classrooms, improves parental involvement, supports to enhance holistic development and moral upbringing of our stakeholders, our students. Language is just a medium to seek knowledge, and it should be enabler, not to create hindrances in the oral development of our students. So we should adopt a linguistic approach. We should not say that we should not adopt this language or we should remove this language. We should adopt a linguistic approach so that the scientific and technical words which we are using in our translation, they should be kept as it is, just like that computers is there, microprocessor, amplifier words, such type of word should be kept in English, and the other content should be translated into a very, very easy and lucid Urdu language, so that our students, our stakeholders can grasp them, can understand them very easily and in a very soft manner. And making these books as a qualitative books for our stakeholders. To fulfill the vision of National Education Policy 2020, AICTE has brought up the 88 books for second year UG and diploma courses for translation into Urdu language in the regional languages, 46 for the diplomas and 42 for the UG programs. These books are based upon model curriculum. AICTE has initiated this model curriculum in 2017, in which they have given the standard model curriculum to all the technical institutions in India. All these books are not just like the journal books which you have come across in the market or come across in the library. These are the outcome-based books
based on the outcome-based pedagogy, which can be described. I can describe these books in their objectives in 4 alphabets: A, B, C, and D. A means audience. Audience means who is going to achieve these books, for whom we are translating these books, for who will read these books, and who will be benefited from these books, for these translated books. Second is that B is for behavior. It means that a learning outcome. Why I am studying this chapter? A student should know that why I am studying this chapter, why I am studying this, the contents of this course or unit or subject, what I have learned from this chapter, what we are expecting, and what the teacher is expecting, what our society is expecting from our society. And third one is C for condition, that what we are providing in terms of facilities, experiential learning, e-digital platform, providing QR code for each chapter, interesting facts, as well as peer learning. So in these books, everything has been imbibed. And for D, degree of accuracy, that to test the efficiency of students, degree of expectations, and the assessment of the students by the objective questions, short answer or long answer type of questions. So these books are the outcome-based books, specially designed for the curriculum designed by the AICTE in 2017. The beauty of these books are that the contents of books are aligned or mapped with course outcomes, program outcome, and unit outcomes respectively, and which are also helpful to attain the NBA accreditation for the institutions also. Students and teacher-centric subject materials are included in these books in a very balanced and in a chronological manner. A well-versed hands-on training on AICTE NEET translation tool will also be provided to all the translators and reviewers to complete your work very fast and in very easy manner. You are kindly requested to complete your work, complete your translation and review within a stipulated time of 2 months. We have only the 2 months. So you are requested to submit all the books, all the translated books to your coordinator within the 2 months. We have to upload it on the e-portal, that is eCoom. AICTE has initiated a portal eCoom, which was inaugurated by Honorable President of India. All MANUU officers, coordinators, translators, and viewers should work as a flag bearer. Your work doesn't finish here, that you have translated the book, you have reviewed the book. Your work doesn't finish here, doesn't end here. You have to work as a flag bearer. You have to work as a torch bearer to popularize this Urdu language, popularize the books in the Urdu language in our society. Without the help of the society, we can't accomplish this work. We cannot give a qualitative work to our society. So the help from the society, cooperation from the society is very much needed, and you are the best resource persons to cooperate, to guide the societies for succeeding in this work. At the outset, I my sincere thanks. I extend my sincere thanks to all of you for attending this orientation program, and special thanks to Professor Mohammad Khalid, coordinator, and their team of the MANUU University for organizing this orientation program. And I am sure that the qualitative books in Urdu language will be accumulated for our students. Thank you very much. Shukriya. Thank you, sir, for sharing your valuable insights with us. Now, I would like to connect online with Dr. Mamta Aragarwar, Advisor AICTE Headquarter New Delhi. मैं मैम का इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस शेयर के साथ कि जिसे हवाए ज़माना कभी बुझा ना सके, जिसे हवाए ज़माना कभी बुझा ना सके, कदम कदम वो एक शमए राह पैदा करे. Now we are going to connect online with Dr. Mamta Aragarwar.
We are facing some technical glitches to connect to ma'am, so we are trying hard. मैं प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब को डाइस पर इस शेर के साथ दावा देती हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पर मौजूद AICTE के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश साहब, DTP के डायरेक्टर माय फ्रेंड प्रोफेसर खालिद मुबशिर साहब, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन अगेन माय फ्रेंड डॉक्टर महमूद काज़मी साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर असलम परवेज साहब, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशनल स्टडीज़ के सभी स्टीम्ड कलीग्स, दीगर डिपार्टमेंट से यहाँ पर ट्रांसलेशन की मोहब्बत में जमा हुए तमाम रफ़क़ाए-कार और बाहर से आने वाले तमाम मंदुबीन, डेलीगेट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदाब, सलाम। Indeed, it's a great pleasure for me to represent our Honorable Vice Chancellor in this inaugural session of orientation program. It's the orientation program for the translators and reviewers of second year UG diploma courses in Urdu language. सबसे पहली बात तो मैं और मेरे जो हम लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि when we started educating ourselves in the schools, we never had an idea that there can be any other medium other than English in this country. The concept was so clear that we were not ready to think beyond it. Whether it is Urdu language or Telugu language or Marathi language, whatever local languages are there, we thought that education can be provided through these languages only up to school level. At college and university level, it's not possible. That was our assumption. Now, when we joined higher education and we studied the educational system of our other countries, then we came to know
that the countries like France, Germany, China, Japan, even highly educated people do not know English language and they work in their own mother tongue. So then this seed was sowed in our minds that if it is possible in China, why not in India? If it is possible in France, why not here? So we started thinking on these lines. Thanks to National Education Policy 2020, that it officially declared that if possible, even in higher education, the students should be supported by providing their mother tongue as a medium of instruction, whether it is medical, whether it is engineering or any other field. In the presence of Dr. Dinesh sir, I would like to remind you, sir, that this particular place, Hyderabad, is known for many experimentations. One of the most important experimentation that this place has witnessed is providing higher education through Urdu medium by Osmania University. When Osmania University was established, its medium of instruction for all the programs was Urdu. Even MBBS, BTech, law, education, all the faculties, they were having through Urdu medium, and it was a very, very successful experiment because I came across with many people, many alumni of Osmania University who had their education through Urdu medium, and they were the masters, rather champions of their field. I remember one of the doctors, Dr. Bhargav at Aurangabad. He was educated through Osmania University. He was simply MBBS. But even MDs and MS, they used to refer their patients to him because he was such an experienced person. So many experts, even Mir Hashim Ali Saab, who was a retired judge, he was also educated through Urdu medium. He studied his law studies from Osmania University. तो ये एक्सपीरियंस बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन लैंग्वेजेस में वो बात पॉसिबल है और इंडियन लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है. इंडियन लैंग्वेजेस में भी इतनी फर्टिलिटी है कि इसमें हायर एजुकेशन दी जा सकती है. नाउ प्रॉब्लम इज many times my students ask, sir, you always refer while teaching philosophy, you always refer foreigners name, why not ours? तो आप जब नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो उसमें फॉरेन ऑथर्स की बात आती है, आप आइडियलिज्म की बात करते हैं तो फॉरेन ऑथर्स की बात आती है. तो क्या ऐसा है कि हमारे लोगों के नाम नहीं आते हैं? तो मैंने एक बहुत आसान सवाल किया. मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आपके घर में अगर बच्चा पैदा हो तो उसका नाम कौन रखता है? तो बोले घर के लोग, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी. मैंने कहा ठीक है, बच्चा आपका तो नाम आप ही रखेंगे ना, तो तहकीक जिसकी है तो नाम कौन रखेगा उसका? जाहिर है कि वही लोग रखेंगे. सो इफ द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग, इन्वेंटिंग एंड साइंटिफिक रिसर्चेस, if the credit goes to them, naturally they will name after their experts. It's but obvious. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. जो वर्क करेगा नाम उसका होगा. अब जो वर्क यहां पर अवेलेबल है, the quantum of knowledge that we have got in English, that is really to be admired, it is to be appreciated. और फिर उसका हमको अगर इस्तेफादा करना है तो मेरी दरखास्त है कि आप तमाम लोग खड़े हो जाएं, तालियों से जोरदार वीसी साहब का इस्तकबाल करें. Thank you very much. Welcome, sir. I extend my wholehearted welcome to Honorable Vice Chancellor sir. मैं आपसे कह रहा था कि जो क्वांटम ऑफ नॉलेज इंग्लिश में अवेलेबल है, अब उसके ट्रांसलेशन का वक्त आ गया है. इसलिए कि आपको वो एजुकेशन अगर उर्दू मीडियम में देना है, हिंदी मीडियम में देना है, तेलुगु मीडियम में देना है, तो उसके ट्रांसलेशन की जरूरत आप महसूस करेंगे. अब यहाँ पर आप तो बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं, आपने अपने अपने फील्ड का तारुफ करवाया, वो तारुफ करवाया कि किस तरीके से आपने ट्रांसलेशनल स्टडीज में काम किया है. चंद एक छोटे से सवालात हैं, जैसे अगर ये कलम कोई मुझसे मांगता है, if somebody asks me to give this pen, will you please lend your pen? अब मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ लीजिए, तो मैं कैसे कहूँगा बताइए?
कोई भी बता दे, कोई तालिब इल्म बता दे। मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ लीजिए, तो कैसे बताएं जी? नहीं दे देते हैं, बोलना क्या है, जुमला क्या रहेगा? उर्दू में कह रहा हूं ना, लीजिए, प्लीज हैव इट। ओके, एनी अदर थिंग? पेश खिदमत है। ओके, द फ्रेजल यूसेज इज हियर यू आर, हियर यू आर। जुमले पे मत जाइए, हियर यू आर का लफ्जी तर्जुमा मत करते बैठिए, उसका मतलब है लीजिए। लीजिए है इसका मतलब लीजिए, दैट्स ऑल। इसी तरीके से अगर मुझे ये कहना है कि मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त टेनिस के अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त टेनिस के अच्छे खिलाड़ी हैं, तो किस तरीके से बोलेंगे हम? अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मी, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड आर गुड टेनिस प्लेयर्स। आई एम सॉरी, अगर आपने इस तरह से कहा तो दैट विल बी अन इंग्लिश। द वेरी रीजन इज, अंग्रेजी में जब बोलना है तो आप अपना तस्करा पहले नहीं करेंगे। चाहे उर्दू में बोलते वक्त आपने अपना नाम पहले कह दिया हो, मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो पहले अपना तस्करा नहीं करेंगे, वो इंग्लिश स्टाइल नहीं होगा। अच्छा चलिए, अंग्रेजी में एक जुमला है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप जानते हैं कि एक मुतरजिम ने क्या तर्जुमा किया उसका? उनसे कहा गया था कि भाई देखिए आजाद तर्जुमानी करना है, मफहूम वाज़े कर देना है, तो उन्होंने कहा कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बिल्कुल सही बात है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, अब वो अपने माफी ज़मीर का इजहार नहीं कर पा रहा, उसके पेट में बहुत तकलीफ थी। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पेट में नहीं, क्या वो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा हो रहा, ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा हो रहा। क्या मतलब इसका? मरोड़ हो रही थी उसको, है ना, पेट में मरोड़ थी उसकी। अब उसको कैसे बोलेंगे? ओके ओके, आई थिंक द हाउस इज सो स्मार्ट, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिलचस्प लतीफ़ा सुन लीजिए। शौहर ने अपनी बीवी को बताया कि दोस्त पढ़े लिखे आ रहे हैं, अंग्रेजी में बात करना है, ऐसे उर्दू में बात नहीं करना है। तो कहा ठीक, तो अल्फाज भी सिखा दिए कि सुबह में जो नाश्ता किया जाता है उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, दोपहर में जो खाना खाया उसको लंच कहते हैं, और शाम में जो होता है उसको डिनर कहते हैं। ठीक है, 2-4 रोज़ ट्रेनिंग चलती रही अच्छे से। अब इत्तेफाक से नाश्ते पर दोस्त आए, तो शौहर ने ड्राइंग रूम में सवाल लगाई, तैयार है? तो अंदर से आवाज़ आई, जी डिनर तैयार है। डिनर तैयार है? शौहर को गुस्सा आ गया, कैसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सिखाया सुबह का नाश्ता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट बोलेंगे। तो खैर वो अंदर गया और कहा कि मैंने आपको क्या सिखाया था, नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट लफ्ज़ होता है, आप अभी तक सीखी नहीं? कहा कि मैं खूब सीख चुकी हूँ, लेकिन ये जो मैंने निकाला है ना, ये रात का बचा हुआ है। अब रात का जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए आप। तो बात दरअसल ये है कि ये तो आम बोलचाल की बात है, मिजाहिया बातें हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का जो फ़न है वाक़तन एक बहुत अहम फ़न है। वो बात कि पूरी स्पिरिट कंटेन किया जाए और उस ज़बान का जो चार्म है वो चार्म भी बरकरार रखा जाए। अगर उर्दू है तो उर्दू की बामाहिरा ज़बान किस तरह से होती है, किस तरीके से जुमले बनाए जाते हैं, किस तरीके से तरकीबें होते हैं, इन तमाम चीज़ों का जब आप ख्याल रखते हुए उसको उर्दू का कालिब देते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करते हैं बल्कि उर्दू का कालिब देते हैं, तब जाकर बात बनती है। और बतौर ख़ास आपका काम तो और भी बहुत नाजुक है, इसलिए कि आप तलबा के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तो उनकी साबिक़ा मालूमात, उनका तजर्बा, वो जिन इस्तिलाहात से वाकिफ़ हैं उन इस्तिलाहात से वाकिफ़ होना, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इस काम में जब आगे बढ़ रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जिस मज़मून का भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस मज़मून से मुताल्लिक़, उस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ चंद बुनियादी किताबों का आप ज़रूर मुताला करें, अंग्रेज़ी में भी करें और उर्दू में भी करें। और इस सिलसिले में NCERT की इंग्लिश की बुक्स और उर्दू मीडियम की बुक्स जो है वो बुनियाद का काम कर सकती है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ परफेक्ट है, उसमें भी गलतियां हो सकती है, लेकिन वो मशअल राह साबित हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया सर का एक बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प खिताब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ममता मैम से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। So we are going to connect with Mamta ma'am. Mamta ma'am, it's our honor that you are here and we can connect and see you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेरी वेरी ऑनरेबल एंड डिस्टिंग्विश्ड वाइस चांसलर ऑफ मानू, कोऑर्डिनेटर Am I audible? Yes, madam, you are audible. Once again, good morning. Very, very distinguished Vice Chancellor of MANUU, who is with us, the chief guest of today's program, coordinator of Urdu language, very, very distinguished academicians who have joined here as translators and reviewers, my worthy colleague, Dr. Dinesh Singh, who is director with us and he is physically present with all of you, registrar of the university. It is indeed a proud privilege for me to address all of you on this very, very significant directive advisory of the government of India that we have to include all our brothers, our sisters, irrespective of the language they speak, in the structured format, in the linguistic inclusivity to ensure that we celebrate the linguistic diversity and linguistic inclusivity of all languages. AICTE has undertaken this very important project wherein we are translating engineering books as well as diploma books in 12 Indian regional languages, and Urdu is one such language. A very, very beautiful Juban, a very beautiful language, but somehow we have yet not been able to get a breakthrough and translate many quality books in Urdu. So that is the reason that I call upon all of you, each one of you, to give your best and make sure that we are able to provide quality textbooks of engineering as well as of diploma in Urdu language. We have a tool with us, but then before we talk about the tool, I want to address all of you and I want to convince all of you that, why should we really be spending so much of time, energy, money, all the resources for translating our technical books in these languages? I strongly believe that once we are convinced about a cause and once we are clear about the objective, I think doing the job becomes much more engaging, much more passionate, and then we do it so much more from our heart. And any work done with lot of passion, with lot of engagement, with involvement becomes really a quality output driven work. So why this language? So the first thing is all the researches across Asia and even different parts of Eastern Asia, even in India, have shown that the outcome, the learning outcome is sharply enhanced when students actually learn the subject, learn the concepts, learn the complex study in their own mother tongue because of their access, their ease, and their deeper understanding in the language. It becomes all the more prominent if we talk about STEM, that is science, technology, engineering, mathematics. So, if we want our students to learn the subject much more deeply, if we want our students not to be afraid of these subjects like mathematics, engineering, and other technical subjects, if we want our students to be deeply involved in class deliberations, in the class discussions where they can very confidently get up and ask a question if they have not understood that question without being feeling intimidated that if I ask this question and if I do not ask this question in the correct English language, then I may be made fun of by my classmates. Everyone may laugh at it, or my teachers may look down upon me that I don't even converse well in the language. So the learning outcome is enhanced. The understanding of the complex topics become much more deeper. Then the class participation of the students becomes much more wider, much more richer.
Another thing is parents, who are a very, very important stakeholder in the learning process of students. Many a times parents are not so well read and their mother tongue is essentially not English, so they are not actually able to understand as to how their child, how their son or daughter is performing in the education because of a non familiarity with the language. So when you provide quality textbooks in the mother tongue and in this particular context in Urdu language, then parental involvement, parental engagement, parents' understanding of how their daughter is performing, how their son is performing will become much more deeper. Various studies, and in fact, specifically two reports, have suggested that the dropout rates in premier engineering colleges and even some grassroots level diploma level colleges have been much higher because of non proficiency of the students coming from a particular medium. For example, if students are coming from Urdu medium or Telugu medium and all of a sudden they have been handed over all the quality books having complex topics in English they may not be so well versed with, then they might find it very, very difficult to grasp. And that may result in their lower involvement in classroom discussions, their not understanding of the topic, and eventually their dropout. So, when national education policy, each one of us, all of us are coming together to make sure that we provide quality textbook to our students. I think I fall upon each one of you, and it is your endeavor, it is your commitment to the cause that will make all the difference. So with this, and I often give this example in all other my speeches, that whenever you do the translation, think about a poor girl coming from a rural background, all those people who are not so privileged as you and me are, who speak the language so efficiently, who do not come from the urban background, who do not have access to so much of digital media, and who may be first generation learners. Think about them. Picture somebody right in front of you, a very poor girl who is trying to understand the concept of thermodynamics or electromagnetics or metaphysics or whatever you want to say in some, your entire perspective to translation will change. Immediately you will try to use the word that is most appropriate, that is simpler, the word which conveys the right meaning. Please consult among yourself wherever there is an issue. Please talk to the coordinator, find out from Google, find out from AICTE's translation tool, find out from all the facilities that are available to you. And even if that also still you are not getting a word, you can always consult one of your senior colleague, one a senior academician who is absolutely well versed with the subject as well as to the language. So we require both. We require absolute language proficiency, we require the subject knowledge, and finally we require your engagement, we require your commitment. The moment you will have a feeling coming from your heart that you are doing it for the wider cause, you are doing it for the deeper understanding, you are doing it to make a difference, and difference in the lives of people who are not so fortunate, difference in the lives of students who are probably first generation learners, who are not necessarily coming from equally socially economically privileged group as you and me come from. I think your entire journey, your entire perspective, your entire approach to translation will change. Please, I request each one of you very, very humbly, please come together and let us provide very good quality books. I am again and again harping on quality books in Urdu language so that our brothers, our sisters who know this language well, they are absolutely benefited. My heartfelt gratitude to the Honorable Vice Chancellor, to the coordinator, to entire MANUU for undertaking this brilliant work. It will go down in history as one of your best contribution to the society and to the nation. All the very best. Thank you so very much. Jai Hind. I'm sincerely grateful, ma'am.
Ma'am, you nailed it. Thank you so much for capturing the audience so well. जो मुतरजमीन पीछे बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो आगे की लाइन्स में आ जाएं। मैं अपने वाइस चांसलर सर का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और प्रोफेसर खालिद मुबशिर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बुके के ज़रिए हमारे हदिया गुल के ज़रिए हमारे प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब ऑनरेबल वाइस चांसलर मानू का इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इवेंट अच्छी रफ्तार से गामज़न है। इसको आगे बढ़ाते हुए हम किताबों के इजरा के लिए किताबों को जी प्रोफेसर एनुल हसन साहब से अदबन इल्तमास करते हैं कि बुक इनागुरल की सेरेमनी इन किताबों में एक किताब क्लासिकी समाजियाती नज़रियात है जिसके मुसन्निफ डॉक्टर सहीद मेओ हैं। क्लासिकी समाजियाती नज़रियात। इसके अलावा एक किताब इस्लामिक स्टडीज़ तसव्वुर सूरत हाल और मुस्तक़बिल जिसके मुदीर प्रोफेसर मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब हैं। एक और किताब प्लांट फिजियोलॉजी जिसके मुसन्निफीन में डॉक्टर मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब और प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब हैं। खुर्दनी फंगी मशरूम ये किताब प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब के ज़रिए तरतीब दी गई है, उसके मुसन्निफ हैं। और 5वीं किताब उसूल समाजियात है जो मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब ने लिखी है। किताबें हर दौर में और आने वाले लोगों के लिए वो ख़जाना होती हैं जिसमें साहिब इल्म अपना तमाम इल्म मौजूदा लोगों के लिए और आने वाले लोगों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अगर किताबें ना हों तो शायद हम एक कदम भी आगे ना बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और काबिल तहसीन हैं वो लोग जो अपने इल्म को किताबों की शक्ल में हमारे लिए पेश करते हैं और छोड़ जाते हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब को डाइस पर इस शेर के साथ दावत देना चाहती हूँ। बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, बाहुनर हो पुरअसर हो कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो फूल हो इत्र हो अंबर हो तुम, आओ महफिल में खताबत का चिराग जो लिए बाइसे फ़ख्र चमनो शम्मे रोशनतर हो तुम। ए नाम तो बेहतरीन सरावाज, बी नाम तो नामे के गुलंबाज। Honorable speakers, guests, participants, ladies and gentlemen, Dr. Mamta Agrawal, online speaker, Dr. Dinesh Singh, Professor Siddiqui Mahmood Sahab, Professor Khalid Mubashir Sahab, Dr. Kazmi Sahab, Dr. Aslam Parvez Sahab, and many others, colleagues, students, friends, ladies and gentlemen, girls and boys. Well, there is a talk about
translation and the quality of translation. Many speakers already look up the matter to the highest extent. But yes, this is a workshop. First of all, I am greatly indebted to AICTE for supporting us and for the selection. I'm glad that Urdu translation is also one of the important tasks before AICTE. And I wish to assure that Dr. Dinesh Singh is here and Mamta ji. We will come up to your expectations because we are very serious about the mandate given by the Government of India, the Act of Parliament, that this is National Urdu University. And we believe that we should strive harder in terms of translating books from diverse studies, diverse languages. And you know, India is so rich. Why can't we make our institution also richer? Now, talking about the translation, see, I'm also a student of language, and from the very beginning I have learned what is translation. There are many variety of levels of translations, n number of ideas, n number of definitions, plenty. Every scholar, every linguist tries to add one more figure in the cap. But yes, the basic thing, the very foundation of a translation is that translation is an art. And that's how under national education policy you will find when there is emphasis on skill development, there is a talk about good translation also. So translation is an art of transforming thoughts and ideas from one language to another. And a translator should have access to both the languages. Source language as well as target language. But often we have seen, Neem Hakim Khatre Jan, Neem Mullah Khatre Iman. When you don't perform, don't really follow the guideline, don't make use of your ability as a translator, then everything goes topsy-turvy. And then the reader will extract a different meaning. Let me tell you, the text is property of the reader, not your property. When you have translated, when you have written, you have made it public, then it is not your property. Rather, the reader will decide what the text is and is it readable or not. If it is not readable, then you will be the bridge of front.
they will complain. Reader will complain. Will say, no, this is not the translation. This is absent translation. And then you face the music. Don't escape. So, God forbid, that day will not come here, because there are people having tremendous expertise over their languages. Not only Urdu language, the background is Urdu language, the mother tongue is Urdu. But yes, having access to so many languages. Arabic is one, Persian is another one. Then English, of course. Hindi, Hindi and Urdu, hardly we make any difference. Only for name's sake, in fact. We say otherwise. Hindi is penetrating into our hearts and minds. See, we cannot escape it. We cannot ignore it. This is the language, you see, which is soul of India, if I say. I can recall the days when I was so enthusiastic to go for translations. It was my MA final year. I thought of translating a text. In the meantime, everybody is greedy. I was also a student, and of course, you see, I was not a saint. I wanted money. So instead of going to translate, I picked a few things, few articles to translate, and then later on I decided, this article will not pay anything, will not provide bread and butter, so then I should go for technical translation, and where, every word is, against some penny. It is well decided. See that you will be given this much per word. And I remember, it was a Rail India department, see, where India and Iran having, collaborations in terms of, railway tracks and railway mechanism, etc. So on. So their engineer, our engineers, so it was a kind of combined effort. And then someone picked me up, see, there was an office in Crown Place, and then approached me, and I said, okay. In spite of the fact, let me just confess that time I was having no experience. But yes, I was so enthusiastic that, okay, this is the project I have to do, and a long-term project. Then I signed the paper. And then I was running from pillar to post at times, because this was very difficult. Because Persian also, Persian into English, and both we belong to Hindi background. I'm Thed Banarsi. You can't expect me to have, such English. And I'm speaking here. Is it a good English? Is it? No, it's very bad. See, that's how you see what I'm saying. It's a matter of experience. You see, over a period of time, you learn, and so many things come in between, and then finally you decide, you become expert. It's not all of a sudden. And during student days, these are, days of experiments. So it was a big challenge. But on one hand, money, on the other hand, translation, my skill, my ability, and how to go to my teachers, how to tell about it. Because, teacher will say, no, you should study, don't do this translation, don't earn money. You are not supposed to, you have come here to earn a degree. Mind your classes, mind your assignments, mind your business. But somehow, a very humble teacher helped me out. He said, okay, you do it and then I will correct it. Then somehow corrections, and the teacher was also greedy fellow, saying, how about my share? I said, yes, something happened. But slowly and gradually, I started learning how to translate from one language to another. And I really picked up. And then what happened? That I was approached by a very senior
professor, Hindi professor, Professor Nawar Singh, who died just a few years back. He was also from Banaras. The novel was written in Banarsi. Banarsi, trade Banarsi. Hindi script in Hindi language. Abdul Bismillah wrote this novel, Jheeni Jheeni Beeni Chadariya. Kabir, Jheeni Jheeni Beeni Chadariya. Kabir is one of the poems of Kabir, Sant Kabir. And then a young girl came from Moscow to translate this book. And there was a competition. See, Moscow gives red rose to the best translation. She came with this intention to provide the best translation. Then what happened? उस नॉवेल में इतनी गालियां थी. And the young girl just, Nawar Singh told me, iski help karo translation. Then I said, okay, all right. But जगह जगह गाली थी. कुछ ऐसी गाली थी कि जिसको मैं अपने दोस्त के साथ भी वो बक नहीं सकते. Because typical kind of weavers locality, the way they behave, they speak, and then at home, outside, in the field. I mean, all these blah blahs. So disturbed. But look at this girl was insisting on that I must know meaning of each and every word, each and every phrase, each and every sentence. She was so practical. And then Marta kya na karta. I had to. I said, Ketan, you close your eyes and then I will speak. And then I really, she did the translation. And to your surprise, she got the first prize in Moscow. And she received red rose. So therefore, then, once nothing succeeds like success. So when when the success story is just before you, then it encourages. One fine morning, I went to NBT. There was, chief of NBT, somewhere near House Khas, there was office. And then I said, okay, I'm a translator. He said, okay. Can you translate one novel from Odia to Urdu? I said, Odia? I don't know. He said, okay. But he was very considerate enough. He said, he was well versed in French language. Ellen Bhattacharya, if somebody remembers Ellen Bhattacharya, his wife was France Bhattacharya. She participated in so many conferences also. So Ellen Bhattacharya was a learned scholar and good translator. He said, okay, son, you do one thing. I'll give you Hindi translation of Mala Chon Ho. Mala Chon Ho means Mara Hua Chand. This title Hindi में था. उर्दू में भी प्रॉब्लम क्या है मरा हुआ चांद लिखने में, ठीक है. राजकिशोर का नॉवल था, वो साहित्य अकेडमी अवार्डी था, उसी के ऊपर अवार्ड भी मिला था. माला जोन हो कटक की कहानी थी पूरी, कटक सिटी की कहानी. उसमें कैसे एक औरत जो है वो वहां से निकलती है, उसको सारी सोसाइटी उसको डिस्कार्ड करती है, मगर वो अपनी ऑनेस्टी के बल पर ये सारा मैदान जीतती है और आखिर में वो ये साबित करती है कि वो इनसिग्निफिकेंट नहीं. तो ये कहानी थी, काफी पैथेटिक थी, काफी पैथेटिक थी. देन आई ट्रांसलेटेड, बट ये भी कहा उन्होंने कि यू टेक दिस ओरिजिनल बुक
Odia novel, and seek help from one of your friends from Odisha. And then I did it. Before submit the translation, you want me to finish? No. Before submitting the translation, I consulted my Odia friends and I said, can you just see whether I am translating correctly or not? And when they approved it, then I submitted to the National Book Trust. That was a remarkable job. Then it was in number of, prints I see even today. In fact, it's very, very famous. Then other translations also. Initially I started my teaching career from the Department of History in CHS, Center for Historical Studies in JNU. And so many students would come to me for, revenue books, the medieval Indian revenue books, they bring and they say, sir, help me out. यही होता है, कहते हैं halfway down. कहीं कहीं आपने एक आध सर्टिफिकेट कोर्स करा दिया बच्चे को, तो बच्चा क्या कोर्ट के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर लेगा, बहुत मुश्किल है, सो डिफिकल्ट. लेकिन उसको एमफिल सबमिट करना है. अब आप एमफिल का ड्यूरेशन तो एक ही सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर कोर्स वर्क है, एक सेमेस्टर डिसर्टेशन, क्या करेंगे? तो मैं यही काम करता था. इनको कभी आर्काइव में बैठा हूँ, कभी डिक्शनरी खोला लाइब्रेरी में बैठा हूँ. बट यू सी, each and every moment pays you when you start gaining experience. Then no documents. You can translate, you can just dictate. Okay, this is, you just write down. You see, I am dictating. This is how that is the state of a good translator. No text is a difficult text, but you have to attain that stage. And then I translated so many books. I was the first person in 1988. I translated Dastambu, Mirza Ghalib's Persian Diary of 1857. It was published initially by Vani Prakashan, and then Raj Kamal and others, and then also some extracts. You see in Aajkal, the government magazine, Hindi magazine Aajkal, and in so many other magazines also. It became very popular, I tell you. Still, you see, they publish 10,000 copies and then immediately they sell it out. Another one comes. Pocket book also. So Dastambu you will find, you see, wherever you see, you can browse through, you see Dastambu, and Amazon also sells Dastambu. What I am saying, now this gives way to your scientific knowledge also. It is not just straight journalism. You can't take liberty with translations. Your will, your whims, they are insignificant. Don't add to it. Don't add your ideas. Only you have to transform ideas from one language to another. Abhi Siddiqui Mahmood Sahab was telling me about the translation. There is a proverbial expression, often I quote it, In Persian, they say, Laila be chashme majnoon bayati. लैला को मजनू की नजर से देखना चाहिए. उर्दू ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है, मगर अगर यही अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो तो अब भद्दे ट्रांसलेशन सुन लीजिए इसके. लैला शुड बी सीन थ्रू द आईज ऑफ मजनू. Pretty bad translation. We once that.
Then someone suggested, let us change some letters. I mean, so some words, some synonyms. Synonyms कैसे उन्होंने कहा? Behold Layla. As Majnun beholds. ये भी गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ हुआ ना? अब see Layla through the sight of Majnun. I mean, say these are the new. I'm just doing this. You say, if you find a similar expression in the English language, then there is total meaning conveyed to the readers. If you say that beauty lies in the eyes of beholder, that's the translation. You should have, idea to transform it from one language to another. And particularly, you see, when there is a poetry is very difficult. Poetry can't be translated because there is a sense. That sense is to be communicated. And my hats off to some of the good translators, like, अभी उनकी डेथ हुई है, शकील क्या नाम था? हाँ? नहीं घोष, अरे शकील क्या नाम है? उर्दू के बहुत बड़े नाकिद भाई शमसुर रहमान फारूकी, पूरा शमसुर रहमान फारूकी साहब और अली जवाद ज़ैदी, तो बड़े बड़े नाम हैं। अली जवाद ज़ैदी ये कभी भी यूनिवर्सिटीज में नहीं गए, नो, इनका कोई मतलब नहीं, ये रेडियो टेलीविजन और कम्युनिकेशन से इनका नाम था, बट दे वर द बेस्ट ट्रांसलेटर्स। आई एम टेलिंग यू, मीर अनीस का ट्रांसलेशन करना वेरी डिफिकल्ट, अली जवाद ज़ैदी डिड इट। देन I found some translation of Josh and Iqbal by Shamsur Rahman. And then the one who says, today let us remember such people. So this is the occasion when you can remember. And really, great people. And what he says, look at translation, what a translation should be. Shamsur Rahman Faruqi says, इधर से देखो तो अपना मकान लगता है, इधर से देखो तो अपना मकान लगता है, एक और जाविये से आसमान लगता है। That should be, इधर से देखो तो एक ट्रांसलेशन, उधर से देखो तो बेस्ट ट्रांसलेशन। Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your expertise. We are tremendously grateful. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Now, I would like to call Professor Khalid, sir, for the introduction of DTTLP. मैं DTTLP की तारीफ के लिए प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर सर को दावत देना चाहती हूँ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not here just to introduce DTTLP. I am here with some news. Unfortunately, we could not listen Professor Rajiv Kumar, Honorable Member Secretary, AICTE, New Delhi, due to sudden demise of his close relative. And we would like to express our sorrow and condolence to him and his family. Definitely, it's a great loss. The other news is that despite of having such a challenging situation with the demise of his beloved sister, Professor Syed Ainul Hasan Sahab, Vice Chancellor, Maulana Azad National Urdu University, is among us. Just yesterday,
he lost his sister. So we pray for both of them, and we hope they will be rest in peace with the mercy of Almighty, the Creator, Allah. We pray for his sisters and our condolences, our heartfelt condolences. Thank We you, pray ma'am. for the departed soul. So this is the situation where we are working since last 2.5 years or 3 years, and I really appreciate you, sir, for leading us with such a great energy and zeal. You're among us. I understand. In the morning, actually, I was not having courage to call him to come to this program, but literally, he has motivated all of us. Academic works are always on the top. He is a true academician, and we pray for all those who lost their lives during pandemic and post-pandemic situations. तो यहाँ पर मुझे बहुत तफसील नहीं है, लेकिन हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट किया। चाय के वक्फे के बाद जो प्रोग्राम होना था उसमें इंशाल्लाह मैं और डॉक्टर दिनेश सिंह हम लोग आपके क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। और अभी मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही ब्रीफ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द DTTLP and the scheme in which actually we call all of you to assemble here in this orientation program. DTTLP was actually incepted in 2016 with the name of DTP, Directorate of Translation and Publications, and later on it has been expanded by the vision of Professor Sayyid Ainul Hasan Sahab and converted into the Directorate of Translation Studies, Lexicography and Publications, with the merger of Department of Translation also in this directorate. So we are working on both the fronts, academics as well as the practical translation works. Till now, in the first phase, actually, DTP was led by late Professor Muhammad Zafaruddin, who was a professor in the Department of Translation earlier, and he was the founder, director of DTP, and during pandemic we lost him also, and we pray for him also. During his tenure, we published 75 books, and after joining this directorate, today we inaugurated 5 books, and 1 more book is there. So totally 81 books we have published so far in Urdu language. Literally, it is a great task, and the books not only we are publishing, but we are making it available for the purchase. Until now, I think approximately more than 7 lakh rupees actually we collected by the sale of these books. So we are planning to make this DTTLP directorate with sound foundation, so that publication and sales of books should be on side by side. Right now we are translating 8 books under a special scheme without having money. All the teachers of Department of Translation, Dr. Mahmood Kazmi, Dr. Fahimuddin Ahmad, Dr. Kaikash Latif, and myself, we are translating 8 books of different subjects, and we have submitted this in the UGC also. 4 unique old books we identified, and we are working on the reprint of those books. Now, AICTE. The story of AICTE is also wonderful. One fine day, Dr. Fahimuddin received a call from JNTU. Normally, myself and Professor Dr. Fahimuddin, we used to go there for translation works, and we got a call from there that there are engineering books, and if you are interested, please come and translate. And Dr. Fahimuddin informed me, and we decided not to translate personally, but to make it as a whole campaign. And we are very much thankful to our kind and beloved Vice Chancellor that when he got the information, he has not only motivated us, but practically he has initiated, and now
we are in contract with AICTE to publish all the engineering books which they are preparing for different courses of engineering. So till now we have translated, the first year books are in translation. Sir, till now we have translated and reviewed 4 books we have received. And just recently I informed 2 days back to Amish Srivastav sir that the work is almost completed for 4 books, and rest of the books, that means till now we have received 19 books of second year and the remaining 16 books of first year. These 33 books we are in the process of translating. All the books have been allotted. Since the books are under preparation and AICTE is actually supplying these books in phases, so we have completed the technical process of translators and we identified them. Today I think we have more than 35 translators with us, sir, from all parts of the country, from Jammu Kashmir, from UP, from Delhi, from Odisha, from Karnataka, from Maharashtra, and from Tamil Nadu, and I think one from Kerala also, and Telangana, and from our university also. So they belong to not only the academia, but they are working in various corporate companies. Some of them are technical researchers and having the Urdu background, and these translators are tested by us, a team of experts. We collected their samples and we have vetted them properly, that what kind of language, what kind of performance they are doing in terms of the translation. So I'm very much thankful to all of you. And why I'm just trying to emphasize the introduction of this is that we have very good representation from various departments of our own university, students, scholars and teachers. And I request that everyone who is interested to do translation, who is interested to do reviewing work, who is interested to do editing work, you can come forward and take part in this noble job. I hope in 2 years we are going to finish this job. Till now we have received 50 lakhs of grant from AICTE, and just now Dr. Saab has informed me that another 50 lakhs we are going to receive in a week. So this is a wonderful thing. And for 20 books, near about 24 lakhs of rupees directly we are getting from AICTE. So first year translators, you will be getting money from AICTE directly, and second year translators, inshallah, this university will make arrangement to disburse the amount to the translator. The process is very simple. Actually, the rates are also different. For first year translators, the whole book will be paid to the translator as 1 lakh rupees honorarium and 20,000 rupees for the reviewer. Whereas in the second year, it is decided to have per word charging, and 1 rupee per word they are going to pay. And this is the formula actually, sir. We normally adopted, and thus that formula has been followed by the AICTE, and they have spread it to other languages also. So this is one thing. Second thing is that mode of payment. About the mode of payment also, unless and until we get a report from the reviewer that the translation is satisfactory, we cannot initiate the process of payment. So I request all of you to just be passionate. Inshallah, all payments will be done in time, and we will not waste much time to or delay in the payments of our translators who are working hardly, and hopefully everything will be finished in a short span of time. Lastly, sir, in the list of translators, we have at least 7 professors. 7 professors from the background of technology. It's not a joke. Alhamdulillah, it's a good team we have prepared, and a good pool of translators we have collected. This process is continued. I request all of you, if you know anybody, because people from Aligarh Muslim University are representing here, people from JNU, people from Jamia, people from Central University of Kashmir, all are here. So we request you, sir, we don't know about your faculties there, but you know better than us who is perfect in Urdu, who has performed, who is involved in the translation work. Alhamdulillah, I'm continuously receiving the calls from all dignitaries and faculties, but I request all of you, if you are interested, please come forward. If you know anybody, please inform us.
Inshallah, we are going to prepare a pool of translators in the field of science and technology, and that will be a great contribution. I appreciate this government that I think since 2004, sir, I was actually trying to visualize. And in my first interview, when I was in the interview in 2004 and at the door of this university, I told that we have to prepare the materials and we have to concentrate on the terminologies. This was the dream, and I appreciate this government that they have taken a step which has not been taken till now, neither in India nor in any other part of the world, that all the technical books will be translated into the local language. And this is a great contribution by the central government, and we must appreciate them and we must come forward to accomplish this task. The whole team of AICTE is doing wonderful job. They are not only cooperating, they are helping us, they are motivating us. But since the time duration is fixed, we are trying to force you to complete your translation in 45 days, and 15 days at least we want to use for the review. No doubt it's a difficult task, but this time I think if we come forward, definitely, because Urdu is the last language I think we come into the picture, and most of the work has been done by the other languages, and we are just going to catch the pace. And at this moment, I request all of you to come forward and do the contributions as much as possible. Thank you very much. थैंक यू सर। हमारा इफ्तिताही यानी कि इनॉग्रल सेशन अब आपने अपने आखिरी पड़ाव पर है। कलमाते तशक्कुर के लिए मैं डॉक्टर असलम परवेज साहब को दावत देना चाहती हूँ। आई वुड लाइक कॉल टू फॉर द वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर असलम परवेज साहब। माशाअल्लाह हमारी जो इफ्तिताही तकरीब है वो नहायत कामयाब रही, और जो कहते हैं कि वेल बिगन हाफ डन, तो ये ऐसा मुझे लगता है कि ये हमारी ओवरऑल कामयाबी की ज़मानत होगी। और हम लोग इसके बाद के जो टेक्निकल सेशन हैं उस सेशन को भी हम लोग कामयाबी से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे हदीये तशक्कुर पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे हरदिल अजीज़ इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद एनुल हसन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से इस मौके पे जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बहुत गम का ये मौका था, इसके बावजूद भी मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ। इसके बावजूद भी आप हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए ताकि जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे शुरका हैं, मुतरजमीन हैं, नज़रसानी कुनिंदगान हैं, उनको हौसला इससे मिल सके। तो कदम कदम पे आपने हमारी रहनुमाई की है, हमारी हौसला अफजाई की है। और इसमें मैं हमारे रजिस्ट्रार साहब मौजूद नहीं हैं, प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब, मैं उनका भी उनके भरपूर ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान हमारे बहुत ही काबिल एहतराम प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब तशरीफ़ ले आए और बहुत गिराम कदर इन्होंने गुफ्तगू की। मैं आपका भी सर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी ख़ास तौर से डॉक्टर दिनेश जी, डायरेक्टर AICTE अटल से, मैं आपका भी सर बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में शुरू से ही हमारी रहनुमाई करते आ रहे हैं और अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आप यहाँ बनफ्स नफीस मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ले आए हैं, हमारी शुरका के लिए बहुत हिम्मत अफजाई की बात है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
हम चूँकि प्रोफेसर, जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया, प्रोफेसर राजीव कुमार जी मेंबर सेक्रेटरी वो तशरीफ़ नहीं ला सके, उनके यहाँ कुछ किसी का सैड डिमाइस बहुत क्लोज रिलेटिव में हुआ है। तो उनका भी मैं गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी ममता जी अभी मौजूद हैं हमारे सामने। मैं मैडम आपका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो आपकी तकरीर हुई, आपकी जो स्पीच हुई, उससे हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, उनके लिए वो बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुफीद साबित होगा। और बाद अज़ा मैं इस प्रोग्राम के रूह रवां DTTLP के डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद मुबश्शिर ज़फ़र साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी क़यादत में ये प्रोग्राम वज़ा किया गया और कामयाबी से प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे सदर शोबे तर्जुमा डॉक्टर सैयद महमूद काज़मी साहब मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और तर्जुमा के शोबे के हमारे दीगर जो साथी हैं, डॉक्टर फ़हीमुद्दीन अहमद साहब, डॉक्टर कहकशां लतीफ़ साहिबा, आप तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा ख़ास तौर से हमारी खुद अपने डायरेक्टोरेट DTTLP में डॉक्टर ज़फ़र गुलजार साहब, हमारे सेक्शन ऑफिसर जो सामने बैठे हुए हैं, और डॉक्टर सादी अरशद साहब, अबरार अफजल साहब, डॉक्टर सैयद माजिद अली वो मौजूद नहीं है अभी इत्तफाक से। मैं आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने बिहाइंड द सीन रहकर जो मेहनत आपने की है वो बहुत खूब है और इससे हमारा प्रोग्राम कामयाब हो सका है। इसके अलावा मैं IMC के जो अपने खासतौर से डायरेक्टर जनाब रिजवान अहमद साहब ने मदद की, और सीनियर इंजीनियर हमारे जनाब शकील अहमद साहब, और भी हमारे सारे दोस्त, सबका नाम लेना मुश्किल है क्योंकि वक्त बहुत हो जाएगा, तो मैं नाम न लेते हुए मैं तमाम अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से चूँकि ये महफिल हमारे ट्रांसलेटर्स के लिए और रिव्यूअर्स के लिए सजी है, क्योंकि आपकी आमद से ही ये प्रोग्राम पॉसिबल हो सका, तो आप अहम हैं हमारे लिए बहुत। मैं चूँकि बहुत अहम लोग इसमें शामिल हैं, हमारे CPDMT के डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर समीर सिद्दीकी साहब, आप लोगों का, स्टेट का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, इन सारे अफराद का हमारे साथ ताउन रहा। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं कितनों का नाम लूँ, मैं जो भी हजरात इसमें शामिल रहे हैं गायबाना तौर पे या यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिस बुशरा रहमान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर सफरी साहब। अब एक प्री ब्रेक है, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद हम लोग को वापस यहाँ टेक्निकल सेशन के लिए आता है। सो वी हैव टू बी बैक आफ्टर 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच। तमाम शुरका से गुजारिश है कि आप लोग फ्रंट रो में तशरीफ लाइए। आगे कुर्सियां खाली हैं और इस तरह से आप अच्छी तरह से बातों को समझ पाएंगे और अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा। डॉक्टर फहीम आप भी तशरीफ ले आए सामने के रो में। हम तब इस टी ब्रेक के बाद टेक्निकल सेशन का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। ये इस टेक्निकल सेशन में ओवरव्यू ऑफ AICTE टेक्निकल बुक राइटिंग स्कीम एंड इट्स ट्रांसलेशन ये करना था, लेकिन अभी हमने थोड़ी सी इसमें तब्दीली की है। जो आपको निज़ामुल अमल जो दिया गया है, शेड्यूल है आपके हाथ में, तो 2 नंबर
आप देखिए कि ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड मेथड्स, AICTE बुक ट्रांसलेशन एक्सपीरियंसेस। इसमें हम लोग AICTE के नीट टूल के मुतालिक हम लोग जानेंगे इस सेशन में कि उर्दू के मवाद के तर्जुमे में नीट टूल कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ AICTE के हमारे जो तजुर्बाकार ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वहाँ के साथी हैं, डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर जी, वो अपनी टीम के साथ शामिल होंगे और वो अपने तजुर्बात आपके साथ शेयर करेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर जी और उनके रिस्पेक्टेड टीम मेंबर्स को कि वो जोड़ने की कोशिश करें ऑनलाइन। टाइम लगेगा। जोड़ी जो भी है उनको जोड़ी। हेलो, ऑन स्क्रीन नहीं आ रहा है। आप करेक्ट होइए ना, हम लोग से सर कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, 1-2 मिनट बैठिए। टेक्निकल सेशन के लिए AICTE के साथ हम लोग 3 प्रोग्राम्स ऑनलाइन थे अभी, और ये प्रोग्राम भी होगा। हेक्टिक ऑफिस शेड्यूल्स में हम टेक्निकल टीम को बुला रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, 5-7 मिनट लगेंगे उसमें। मीनवाइल मैं आप लोगों को खास तौर पे जो ट्रांसलेटर्स हैं, 2 बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ट्रांसलेटर्स और रिव्यूअर्स जो हैं, उनके जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उन पर हमारे ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होने के बाद आप लोग सवालात करें। दिनेश सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, मैं खुद भी हूँ। डायरेक्ट आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तकरीबन चीज़ें माजिद साहब डील कर रहे थे और कभी जो ना हमारे डॉक्टर जफर गुलजार डील कर रहे हैं। अब हम खुद सामने हैं आपके, तो अगर कोई भी सवाल आपका उसमें हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, इस दफ़ा जो ट्रांसलेशन का जो कंटेंट आपको दिया गया है, तो फर्स्ट ईयर की जब बुक्स आई हमारे पास 20 बुक्स, तो उसमें 2 बुक्स के अंदर प्रॉब्लम्स थे। एक तो बुक का हमको वर्ड मटेरियल अभी तक भी नहीं मिला, PDF पे मिली, और PDF से फिर ट्रांसलेट करने के लिए हम कोई भी कंप्यूटर एडेड टूल्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि जो पिक्चर्स होते हैं और जो सिंबल्स हैं, वो भी जो ना हम कॉपी नहीं कर पाते। तो इस तरह का मसला 2 किताबों के बारे में आया। एक किताब डॉक्टर फहीमुद्दीन अहमद साहब को जो दी गई, वो तो गुजराती में आ गई। तो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी आपको। तो पहली टूल है नीट, जो अभी आपको जिस पर वहाँ से जो एक्सप्लेनेशन देना है वो देंगे, फिर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। नीट की टूल का मैं आपको ये बताऊं कि हमें जो तर्जुमा मिला अभी तक, यानी 18 किताबों का ट्रांसलेशन उन्होंने दिया है। तो आपको मटेरियल कैसे मिल रहा है? आपको मटेरियल एक वर्ड में एक बुक मिल रही है और एक बुक ऑलरेडी ट्रांसलेटेड मिल रही है। ये फर्स्ट ईयर वालों के साथ हुआ है। फर्स्ट ईयर की जितनी किताबें हैं उन्होंने नीट टूल से ट्रांसलेट करके दी। वो ट्रांसलेशन 30 to 40% ही काम करने वाला है, लेकिन मैंने जो महसूस किया ये कि उसमें हमें जो फायदा है वो इस्तिलाहात का है, टर्मिनोलॉजीज का है। आप लैंग्वेज पे जाएंगे तो वो लैंग्वेज बिल्कुल ही यानी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन चूंकि वो टूल जो है ना, उसका डेटाबेस जो है वो AICTE में है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो ना वो कंटेंट वहाँ पर डेवलप हुआ है, तो टर्मिनोलॉजीज में काफ़ी मुझे मदद मिली। फर्स्ट बुक मैंने जो एनवायरमेंटल साइंस की ली थी, उसमें मेरी ट्रांसलेशन स्पीड इतनी बड़ी कि 15 दिन में मैं कर सका हूँ। और साइंस के तर्जुमे में सबसे बड़ा मसला जो आता है वो टर्मिनोलॉजीज ही का आता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है और बहुत सारी चीज़ें। तो नीट की टूल के बारे में टेक्निकल अब उनका प्रपोजल ये है कि वो यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। मानू में वो टूल इंस्टॉल कर दी जाएगी। मानू की हमारी मशीन ट्रांसलेशन लैब है, उस लैब में वो टूल इंस्टॉल कर दी जाएगी, तो स्टूडेंट को भी फायदा होगा। उनका जो मशीन ट्रांसलेशन का करिकुलम है उसमें 2 टूल्स जो ना ऐड होने जा रही है। तो ये वो टूल है जिस पर
उर्दू में बहरहाल कुछ ना कुछ काम हुआ है। दूसरी टूल है उड़ान। मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ ट्रांसलेटर्स, इससे पहले हमारा जो ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ था उस वक्त उड़ान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उड़ान IIT मुंबई का वो बेहतरीन टूल है इस वक्त किसी भी लैंग्वेज के लिए जो इंडियन बैकग्राउंड में अच्छा ट्रांसलेशन दे रहा है। तो ऑल अदर लैंग्वेजेस के लिए उनके पास कंटेंट है, हमारे लिए नहीं है, इसलिए कि उर्दू का जो बेस कारपास होना है वो उनके पास नहीं है। तो अब वो लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उड़ान का फायदा तो शायद सेकंड ईयर वालों को नहीं होगा। ये 6 महीने में हम उनको बेस कंटेंट देंगे और बेस कंटेंट देने के बाद हमारे पास जो लोग रिसर्च कर रहे हैं मशीन ट्रांसलेशन और टेक्निकल ट्रांसलेशन से रिलेटेड मौजूदात पर, या हमारे पास जो ऑलरेडी मशीन रीडेबल कंटेंट है वो कंटेंट हम देंगे उनको। उसके बाद होगा वो तो मुमकिन है कि थर्ड ईयर के लोग, जो थर्ड ईयर में आप ही लोग जब कोई किताब करेंगे या दूसरे ट्रांसलेटर होंगे तो उनको फायदा होगा। तो अब आपको नीट का फायदा होना चाहिए। स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, 1/3 तो बढ़ेगी। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है लेकिन नीट का जो ट्रांसलेशन है, तो अब हम यहाँ नीट के बारे में जो डिस्कशन होगा वो जान लेंगे और उसके बाद आपको नीट ट्रांसलेटेड बुक्स हम लोग, मेरा ख्याल है सर हम लोग दिनेश सर हम लोग 1 महीने में दे सकेंगे इनको। ये हमसे जो टाइम बाउंड्री पूछी जा रही है तो हम यही पूछ रहे हैं कि उर्दू कंटेंट हमें नहीं मिला, तो अगर आप ये फैसिलिटेट कर दें कि नीट ट्रांसलेटेड बुक्स जो सेकंड ईयर की हमारे पास 19 बुक्स आई हैं वो हमें अगर 1 वीक में मिल जाए तो वी विल पास ऑन इट टू द ट्रांसलेटर्स। ये हमारी रिक्वेस्ट है और आप लोगों को भी जो ना उससे स्पीड होगी। मेंटेनेंस का तरीका ये है कि ये लोग जिस सॉफ्टवेयर में बुक को रेडी टू प्रिंट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इन डिजाइन के कोई हैं हमारे पास इस वक्त? माशाल्लाह 2 लोग हैं, तो आप लोगों से मैं अलग से बात करूंगा। इन डिजाइन का जो प्रॉब्लम है इनको उर्दू लैंग्वेज के हवाले से, वो प्रॉब्लम आने के नतीजे में 4 किताबें हमारी तैयार हो गई हैं लेकिन 4 किताबें रेडी टू प्रिंट नहीं। सो वी विल रिजॉल्व दैट इशू आल्सो। 2 of them please meet to me in lunch break and we'll discuss. बाकी किताबों के सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर उर्दू का जो कंटेंट है और इंग्लिश का जो कंटेंट है, मैं जो मेथड इस्तेमाल किया वो बता रहा हूँ आपको कि मैंने 2 विंडोज ओपन कर ली। एक विंडो में इंग्लिश बुक है और दूसरी विंडो मैंने उर्दू बुक का जो ना ओपन किया है। जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो इंग्लिश ही की कॉपी में कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप कि इंग्लिश की आपको 2 तैयार करनी है। आप पैराग्राफ टू पैराग्राफ वहां पर उर्दू कंटेंट चेंज करते चले जाएं, नीड नॉट टू टच द फिगर्स, नीड नॉट टू टच द टेबल्स। वो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, उसमें जो है ना काफी जो ना आपको वक्त और जो ना एनर्जी बहुत महफूज हो जाएगी। ये लोगों का ये भी मतलब है कि अगर किसी पिक्चर में कोई इनबिल्ट अगर नेम्स हैं, नीड नॉट टू ट्रांसलेट इट, उसके पीछे मत पड़िए, वो बहुत मेहनत लेंगे। अगर साइज और जो ना अगर आपका यानी यूँ समझिए कि बुक का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, घबराइए मत, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो कंटेंट देना आपकी जिम्मेदारी है, ट्रांसलेटेड कंटेंट, ना कि जो है ना उसको पूरा सेट करके देना है। सेटिंग के इस चक्कर में जो लोग गए हैं 15-15 दिन परेशान हुए हैं खाली, तो आप लोग सेटिंग के चक्कर में मत जाइए, कंटेंट दीजिए। ऑर्डर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जाने दीजिए। तो पहले मरहले पर ट्रांसलेटर का काम यही होगा कि वो इंग्लिश की जो बुक है उसी फॉर्मेट में उर्दू के कंटेंट को ला ले। अब इसमें अलाइनमेंट का मसला भी आपको बहुत देखना होगा, अलाइनमेंट आप प्रॉपर करें, इसलिए कि उर्दू का अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट है, वो जो ना लेफ्ट टू राइट है, तो इसमें आपको चैलेंजेस आएंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है वो बड़े चैलेंजेस नहीं है। कॉपी पेस्ट में हम एक चीज का ख्याल रखें कि चेंज ऑफ अलाइनमेंट अगर हम करते हैं तो वो मसला हल हो जाता है। तो ये जो चीज है इसके सिलसिले में हम पहले सुन लेंगे वहां से, उसके बाद फिर जो है ना फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जब तक वहां की टीम, नीट की टीम ज्वाइन नहीं कर रही है, वी आर ओपन। अभी इस वक्त ओपन सेशन है। ऑल ट्रांसलेटर्स, आप कोई भी सवाल किसी भी चीज से मुताल्लिक हो या कोई बेहतर सजेशन हो तो आप आगे आए, बोले और इंशाल्लाह हम उसको इंटरेक्ट करेंगे। उस पर जो है ना दिनेश सर यहाँ मौजूद हैं, वो आपको क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को, और फर्दर जो है ना हम एक बहुत ही टीम स्पिरिट के मैटर में हम लोग जो है ना काम को आगे बढ़ाएंगे। तो यू वांट टू से समथिंग? यस प्लीज कर।
थैंक यू प्रोफेसर जफर जी। मैं भी आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। जो भी ट्रांसलेटर्स हैं, आप जब ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश टू उर्दू लैंग्वेज में, तो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग में आता है 1 2 3 4 नंबरिंग्स हैं या ABCD है, उसको आपने चेंज नहीं करना है। सेकेंड थिंग, जो आपके फिगर्स हैं, फिगर्स के इनसाइड जो भी कंटेंट्स हैं, टेक्स्ट है, उसको आपने चेंज नहीं करना है। आपने सिर्फ फिगर का हेडिंग जो है दैट यू हैव टू चेंज। अगर फिगर है, कंप्यूटर्स का फिगर है, नीचे लिखा हुआ कंप्यूटर्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर फिगर्स के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर्स है, मेमोरी है, हार्डवेयर है, व्हाटएवर, वो आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि उसमें काफी डिफिकल्टीज आपको आ जाएगी, तो वो आपने चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। करेक्ट। और आपकी सहूलियत के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। इस पोस्ट पर एक बुक आपको कोऑर्डिनेटर सर ने आपको दी है, और उसमें आपने 10 चैप्टर्स है। तो आपने 10 चैप्टर्स को कंप्लीट ट्रांसलेट करके नहीं देना है, 1 बाय 1 आपने सबमिट कर देना। फर्स्ट चैप्टर हुआ, आप कोऑर्डिनेटर सर को ट्रांसमिट कीजिए और फिर वो रिव्यूअर को देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा काम स्पीड अप हो जाएगा। I think Dr. Buddha Chandrasekhar ji, you are most welcome on the behalf of AICTE and MANUU University, Hyderabad. So, sir, please you start. Our Chief Technological Officer, Dr. Buddha Chandrasekhar, has joined us. He is the expert of the AICTE need to. So he will guide us and motivate us. Please, sir. Please continue, sir. Yeah. Thank you. Namaste to all. As I hope this is in Hyderabad, right? I think Andarki Namaskaram. As we will let us try to explore, because we have created one wonderful tool which has a compilation of various translation of various languages. But as you know, language is not the only thing in this translation work. The formatting is also plays a major role. So we tried our best to create an application which can translate as well as keep the formatting as it is. So I would like to demonstrate that tool with you. Just give me a minute. I just joined. Be able to share my screen. Just see if I can share my screen. Share system audio. Are you able to see my screen? Yes, sir. Hello? Yes, sir. So is my voice clear so that I can continue? Yes, sir. You can. Hello. Can someone please confirm? Yes, sir. Please continue, sir. Yeah. So as India has various beautiful vernacular languages, so Honorable Prime Minister's vision is to provide the education in local languages. When we say local language, the mother tongue basically, whatever the language mother speaks, right? That is very close to our heart, as well as it will become a operating system, language operating system for that child. So let's say, if someone is from Andhra Pradesh or Telangana, their mother tongue is normally basically by default is Telugu. Or someone who's living within the purview of Hyderabad, so then maybe their mother tongue is, Urdu. So this is a pattern, right? So what happens, that will become their mother tongue, and, that is the base operating language. And then they reinterpret the rest of the language, and they will try to put it on top of the, the local mother language. So let's see if I'm speaking in Hindi now, English or Hindi. What I'm doing is I'm interpreting, taking that information in Telugu, reinterpreting, and then giving it in either in Hindi or English or any other language. So local language / mother language plays a major role, not only in the education, in the trading, in the skilling. Imagine a doctor who finished their MBBS in local language, and they can serve better in small tandas, remote village areas in Telangana, right?
So that is the importance, what we see, and this will help not only at the education point of view, in a societal point of view also. So that's where things started. And we have created our own tool, because what happens if you do a translation in Google, right? What happens, that entire information will be crawled by Google, and they know what is that you are translating. That entire information will go to the FBI. So instead of that, we thought we will create our own tool and our own data sets, so that it will help you in future. And you can, no one is basically capturing the details. So this tool basically translates your book, English or any other language book, from one language to another Indian language as well as foreign languages. So first let us concentrate on our Indian languages. Let's say you have a book in English. Okay, you want to translate that in Urdu. You can do it using this tool very easily. So it can translate into Hindi, Bengali, Marathi, Telugu, Tamil, Gujarati, Kannada, Malayalam, Assami, Punjabi, and Russian, Chinese, Japanese, Italian, Arabic. We have all those. Imagine you have a book in Urdu. Okay, now you want to translate that into Telugu or Tamil. You can do that. So this is a tool of a two-way system. You can do on both the sides, which I will demonstrate. Along with that, this tool has a workflow process. Example, if you as a translator, you want to submit your interest, you can submit your interest. We will give you 2 to 3 pages of POC, proof of concept, so that we can validate your translation capabilities. Then we can assign the actual work. So there is no such provision or a workflow process in Google Translation. It just plainly translates, and it doesn't, when you translate also, if you observe, if you're translating a Word document, it doesn't take the images, or it doesn't take the special characters, etc. But in this tool, it has all those ingredients in place, so that it just replicates what is there on the other side. And it works on work in progress, which I will demonstrate what it means. And it has a capability of accommodating math, science, chemical formulas, etc. And you can even create an audio version out of this book. I will show you how you can do it. And once you finish your translation, you can send it to a validator, and validator can validate. And if he want you to do some changes, he can send that file back to you using this workflow process. So very simple, easy to use tool, and very extraordinary demonstrated, well proven tool. So I'm going to demonstrate two different tools to you. One is the text translation. The book translation. The second one is a speech translation. So these are the two different tools we have. So which I would like to take. But this is a beautiful translation what we created and named it as Ma means mother. Okay, so what happens is, imagine now you have a book ready, but in our country there's lots of divyangs are there, right? So how they can see it, because they are blind. So what we can do is we can create an audio file out of it. And let's say you have a book in Urdu or in Hindi. Now you want to translate that into other languages. All you need to do is just record that and take it into any other 23 languages, including foreign languages. So imagine you have a YouTube video, you can simply play it, it records all that voice and it translates. So I will demonstrate that tool to you. So it works in a very simple thing. If you speak or you record, it records and it translates into the required Indian or foreign language, and it will give you not only the audio file, it will give you the text file also, so that you can use that text anywhere. And you can download or share that audio file. So that's the beauty of this tool. Okay, so these are the couple of screenshots, but I will quickly go back to the tool and demonstrate the tool. I just translated one book here, but I will just do it once again. So all you need to do is we will give you the link. Now let's take a scenario. I have an English book. Okay, I want to translate it into Urdu. So let's take that scenario. So you can translate this book into Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu, Arabic, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish. We have all Taiwanese, etc. But let's just take the Urdu version now. Okay, imagine you have English and you want to translate to Urdu now. You can take any source and move towards Urdu. Let me just pull the. Okay. So I have a book in English.
Okay, so I want to translate that into Urdu. So all I do is now I'm connecting deep learning tool. This is an online tool which basically takes up to 20 to 25 pages and it translates online. But if you have like 200, 300 pages book, then we have a deep learning tool which we will demonstrate using another server machine. It doesn't have any user interface, but we will basically receive that file and we will do a translation. Now it is working on the background. It is doing all the magic what it's supposed to do. Once it finishes, it will give you two windows. Okay, so first window, if you see the actual file, you know, in English, okay, which you updated, so you will see that file here. So it has some paragraphs, it has some you know, outcome based education, some tables, some special characters, and you know, it has some very big tables with numbers, etc., etc. So this is the outcome of that file. So you can see the outcome of the file in Urdu. Maybe what I can do is I will download this translated raw file. I mean, you know, the Urdu version, so that you can see it screen. So once the translation is finished, you can even download the file. Okay, so that's the beauty of this application. So I will just put it, enable edit. So this is the translated version of that book. I mean, I can't read Urdu. Maybe someone can help me on that, whether it's correct or not. But I will just try to demonstrate that. So this is the Urdu version of the translated you know, version. If you remember the table, right? So the same table, maybe I will open the same book in English. So that you can compare. Give me a minute, I will open the English version. So this is the English version of the book. Okay, so Acknowledgement. Come down a bit. These are the paragraphs, outcome-based education, and there is a table. Within that table, you have some text. Now I will just go through the Urdu version of it, whether you can read it or not. Sir, move it. I will try to read it. Yes, it is readable, though it is not aligned right to left. But निसाब मॉडल AICTE के पहले साल के कोर्सेज डिग्री ग्रेजुएटेड में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग. हाँ, तो अभी आप ये इसका खास ये है कि देखिए बोल्ड में है, बोल्ड में पढ़ रहा हूँ सर. आउटकम ऑफ द कोर्स, नताइज, कोर्स के नताइज समझ रहा हूँ. अलाइनमेंट की वजह से हो. यस सर, इट इज वर्केबल एक्चुअली. Left to right and right to left alignment problem is there. If we align it right to left, then sentences will become normal. So it's going. That's fine. I mean, we will see, because as we don't understand, so compiler तो लिख दिया हम लोग that we will put it right to left. So example, if you take this table, right? So that entire table you will see that as it is in Urdu. Okay, so yes, and this translation is okay, so, with some errors. So now this is
को पायलट अभी नहीं तो आप करेंगे, अभी आपका काम है ये बाकी सब छोटा मोटा चीज भी करना। ट्रांसलेटर का ये काम ये है कि आपको हेल्प करेगा ये टूल, क्योंकि दिस इज अ मिशन लर्न अंडरस्टैंड इट ट्रांसलेट्स। एंड ये करते करते क्या होगा, आपका ये डाटा सेट ज़्यादा जब हो जाएगा, ये छोटा मोटा मिस्टेक्स भी ये करेक्शन कर लेगा। बट ये टूल में खासियत ये है कि जब आप गूगल ट्रांसलेशन टूल लेंगे ना, इट टेक्स वर्ड बाय वर्ड एंड ट्रांसलेट्स। बट हमारा टूल ऐसा है कि इट टेक्स द एंटायर सेंटेंस, इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड इट ट्राइज टू रिप्लिकेट। तो ये एक ब्यूटी है इसमें। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जांपल आई विल डेमोन्स्ट्रेट अनदर थिंग। अभी समझे यही आप जब एडिट करना चाहते हो ये डॉक्यूमेंट को, तो हमने खुद इधर एक एडिटर दे दिया। तो ये एडिटर आपको पूरा आई मीन इफ यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, you can edit that entire document. One second, it is just I'm having some net issue, just give me a minute. Local वाला net नहीं चल रहा। I hope you can see the text now. तो अभी समझिए, अभी मुझे क्या लगा कि इधर I want to add something, ठीक है ना। अभी मैं बात कर लूंगा, उर्दू में आ जाएगा उधर टाइप। अच्छा, एक मिनट, आई एम जस्ट फेसिंग नेट इशू, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर। Do you see it? Yes. I think अभी आएगा, आपको देखिए आ चुका। I mean, sorry, I'm having some net issue। तो ये आप क्या करेंगे, if you want to edit anything, आप सिंपली आप इधर बात कर लेंगे, टाइप नहीं करेंगे। कौन से जगह पे चाहिए उधर आप इसको पेस्ट कर लेंगे आराम से। तो कॉपी टेक्स्ट करेंगे, पेस्ट कर लेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे। आपको क्या चाहिए, वर्ड एडिटर में क्या क्या फैसिलिटीज है, सब फैसिलिटीज इसमें हमने दे दिया। तो इससे क्या हुआ, आपको आप आराम से इसके ऊपर काम कर लेंगे। देयर सम नेट इश्यू ऑन माय साइड। तो आई थिंक अभी आपको दिखाई दिया ना, ये मैंने पेस्ट किया था इधर जी। अब अभी समझिए, आपको फॉन्ट कलर चेंज करना। अभी ये तो ब्लैक में है, समझो इसको रेड करना है। तो आप इसको रेड सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे ये पूरा फॉन्ट रेड हो जाएगा। यस। तो बट अभी तक आपने कुछ सेव नहीं किया, फिर भी जब आप प्रीव्यू में देखेंगे ये ऑटो सेव नहीं। ये भी एक अच्छा सा फैसिलिटी हमने दिया, क्योंकि क्या होगा साहब, आप हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में भी और एडिटिंग, तो आप भूल जाते हो कुछ टाइम पे सेव करना ना। तो बट ये टूल ऐसा है कि ये खुद सेव कर लेगा पूरा ऑनलाइन में भी, फिर भी ये पूरा ऑटो सेव होके आ जाएगा आपके सामने। ऐसा खासियत है इसमें। दूसरा, जब आप ये पूरा कर लेंगे उसके बाद आप प्रिंट करके इसको पीडीएफ वर्जन में आप डाउनलोड ले सकते हो। नहीं तो मैं आपको ये भी एक छोटा सा चीज दिखा दूंगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है आपको, तो कैसा करेंगे आप। हमने ये पूरा स्पेशल कैरेक्टर्स कितना है सब एक जगह पे रहेगा। इससे क्या होगा, आपको समझो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेशल कैरेक्टर है वो आप टाइप करना चाहते हो, कैसा करेंगे टाइप। तो अभी एग्जाम्पल ये वाला है, ये अंडर ग्रुप है, ये देखिए, ये भी अंडर ग्रुप। अभी इसको टाइप कैसा करेंगे आप वर्ड में, तो टाइप करना बहुत मुश्किल है ना। तो हमने ये फॉर्मूला दे दिया। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉपी दिस फॉर्मूला। आप वापस ये इस पे आ जाएंगे, आप इधर, सॉरी आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लेंगे एंड यू जस्ट पुट इट। हैंग हो गया। सो यू विल सी दैट स्पेशल कैरेक्टर को कौन से जगह पे चाहिए उधर आप इंसर्ट कर देंगे इसको। आई थिंक थोड़ा मेरा नेट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आई थिंक यू आर सीइंग इट लिटिल लेट।
Yes. Are you able to? अब से Yes, yes, समझिए yes. साहब, ये ए बी के जगह पे आपको लगा नहीं मुझे सी डी चाहिए, तो आप इधर जाके सिंपली इसको चेंज कर देंगे बस। Are you able to see this this CD? Yes. उसको मैं आप ये तो बटन मैंने ऐसी नहीं क्या, if you observe Sir, your voice was breaking. Yeah, 1 second, I will try to switch to another network. Just give me a minute. Now it is clear. Again hand. Your system is hanged, sir. Sir, if it is possible, you can go out and log in again. Can you please speak, sir? What I'm trying to say is, it is auto save, so you don't need to save. ऑटोमेटिकली ये खुद सेव कर लेगा वो पूरा डॉक्यूमेंट को, ताकि आपके सामने ये विदाउट सेव बटन प्रेस ना करते हुए भी पूरा सेव होके आपके सामने आ जाए। आप इसको यू कैन डू अ प्रिंट, एंड प्रिंट में आप पीडीएफ जैसा इसको आप सेव भी कर सकते हैं। I would like to show you the next देखो अभी मैं प्रिंट का दिया था ये यू कैन एज अ पीडीएफ, आपके सामने ये पूरा पीडीएफ का सेव, यू कैन डाउनलोड दिस इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। प्रोडक्ट हमारा पास that I would like to another mission, because network, another network. So we take my voice इधर बंद कर ये ओपन करो यार। Are you able to hear me? See, this is our another very interesting speech to speech tool. Sir, please unmute yourself. Hello. Are you able to hear me? Yes, sir. हाँ, क्योंकि मैं दूसरा मिशन मेरा बगल में ही है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ।
तो अभी देखिए, अभी इफ यू आर एबल टू सी my screen, I mean on the other machine, तो दिस इज अ वॉइस रिकॉर्डर। इसमें क्या होगा, आपके पास कुछ बुक है, नहीं तो आप खुद कुछ रीड ऑडियो वर्जन करके उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में दिव्यांग लोगों को देना चाहते हो, तो अभी आप क्या करेंगे, पहले इधर आके आप इस पे कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। मेरा नाम बुद्धा चंद्रशेखर। आप ये कितना टाइम चाहिए उतना टाइम कर सकते हो। पहला ये क्या करेगा, पहला दिस विल गिव यू इन हिंदी, तो पहले हिंदी में तो आ गया, बट अभी आपको ये उर्दू में चाहिए, वो भी मेल वॉइस में उर्दू में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट कर लेंगे उर्दू। तो पहला ये उर्दू में आपको टेक्स्ट मिल गया, इफ यू सी डाउन राइट, तो उर्दू में पहला टेक्स्ट मिल गया आपको। बट ये टेक्स्ट के साथ आप ये कन्वर्ट टू स्पीच जब करेंगे, आर यू एबल टू हियर? हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी, अभी नाउ आई विल डू दिस इन तेलुगु, ओके। So if you see it's in Telugu, నా పేరు బుద్ధ చంద్రశేఖర్. So now it will, you can do this. ये एक बार आपके पास आ गया, आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोडेड ऑडियो करके वो बुक के साथ आप अटैच करके ऑडियो फाइल भी भेज सकते हो आप, क्योंकि ये एक फैसिलिटी हमने दिया। अभी कोई भी लैंग्वेज चाहिए आपको, आप क्या करेंगे, सिंपली जाके इधर सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से इन तमिल। सो अभी ये तमिल का रेडी हो गया, आप कन्वर्ट टू स्पीच करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द कन्वर्ट। आप इस पे आके ये डाउनलोड कर लेंगे ऑडियो फाइल को। जब आप ऑडियो फाइल डाउनलोड करेंगे, ये एक वेब फाइल जैसा आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसा कितना भी पेजेस रहने दीजिए, आप इसमें कर लें, क्योंकि जब स्टार्ट करने के बाद पॉज भी है बीच में, तो आप पॉज भी कर सकते हो इसको। समझो अभी आपको फीमेल वॉइस में चाहिए, तो फीमेल है ट्रांसलेटर कोई, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली फीमेल एग्जाम्पल आई विल पुट इट इन गुजराती, तो ये गुजराती है, कन्वर्ट टू स्पीच करेंगे आप एंड यू विल स्पीक। इट्स नॉट ऑडिबल। शेयरिंग में ऑडियो कनेक्शन नहीं है ना सर, इसलिए नहीं आ रही। क्या हो रहा है? We are not sharing the audio. शेयरिंग स्टॉप करके फिर से शेयर करोगे ऑडियो? You can stop sharing and then again share the audio, sir. एक बार वापस, अरे स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करो यार। सर एक बार स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर बटन दबाइए वहाँ पे। हाँ जी, वी आर डूइंग इट। स्क्रीन शेयर स्क्रीन, उसके बाद आएगा इधर शेयर सिस्टम ऑडियो, शेयर कर लो, गॉट इट। अब करो, ये रन करो ना। मारू नाम बुद्ध चंद्रशेखर के, ये आपको सुनाई दे रहा है? ये अभी गुजराती में बात हुआ इधर। जी जी आ रही है सर आवाज। अभी देखिए, उर्दू में चाहिए तो आप उर्दू सेलेक्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मेरा नाम बुद्ध चंद्रशेखर है। ये देखो, ये फीमेल वॉइस है, आपको मेल वॉइस चाहिए, आप क्या करेंगे, इधर जाके मेल वॉइस कर लेंगे बस। तो देखिए साहब, ये टूल इतना बढ़िया टूल है आपको। अभी आप सोचो, उर्दू में एक बुक है आपके पास, आप बाकी 23 लैंग्वेजेस में करना चाहते, चलो हम लोग ना ये अरबिक में डालेंगे ना, ये अरबिक वाला, आई मीन विच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट ऐसे आप लोग को पता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट टू स्पीच कर लेंगे। इसमें बुद्ध चंद्रशेखर, तो ये अभी अरबिक हो गया। अभी आप कोई भी ले लो, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, आई मीन यू नो एवरी लैंग्वेज। तो आप आपका बुक, आपका ऑडियो फाइल कोई भी लैंग्वेज में ऐसा ट्रांसलेट करके सीधा ले सकते हो। इसके ऊपर और एक प्रोविजन ये है कि यू कैन डाउनलोड द ऑडियो फाइल, क्योंकि कन्वर्ट करना एक चीज है, आपको डाउनलोड करके देना दूसरा चीज है ना। तो अभी ये आप डाउनलोड एज ऑडियो कर लेंगे। आप देखिए, इधर एक वेब फाइल जैसा आ जाएगा,
इसमें बोधा चंद्रशेखर। देखो जब ये रन करेंगे आप तो ये ऑडियो फाइल आप कोई भी जगह अटैच कर सकते हो। समझो आपके पास यूट्यूब वीडियो है तो वो यूट्यूब वीडियो में आपने हिंदी में या उर्दू में बना दिया, अब ये 23 लैंग्वेज में ऑडियो बना के आप इसको डाउनलोड Sir, करके is it reversible? Is it reversible? Text to audio? नहीं, not text to audio. We have another interesting tool which I will show you. It's under process. It's developing. अभी देखिए, अभी समझिए आपके पास कोई ऐसा ही टेक्स्ट है। लेट अस टेक द सेम टेक्स्ट हियर। अब ये क्या है, ये कौन सा अरबिक में है। मेरा पास अरबिक में टेक्स्ट है, मुझे लगा ये अरबिक का टेक्स्ट को मुझे दोनों इसमें चाहिए, मैं वो ये दिखाऊंगा आपको। अरबिक आप पहला डाल दिया अरबिक का, आप इसको चाहिए तो स्पीच जैसा ले सकते हो क्योंकि टेक्स्ट को स्पीच हो जाएगा पहला, वो भी है ऑप्शन। और आपको लगा ये अरबिक में है, अब ये मुझे तेलुगु में चाहिए तो आपको तेलुगु में आ गया इधर। आप इसको टेक्स्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो स्पीच जैसा भी आ जाएगा। जब आप स्पीच कन्वर्ट सो आर यू एबल टू हियर इट? Yes, तो yes, एक you are आने के बाद ये डाउनलोड एज ऑडियो जब करेंगे, ये आपका वो ऑडियो फाइल रेडी आपके सामने आ गया। ना पेरू बुद्धा चंद्रशेखर। ठीक है ना जी, ऐसा आप कोई भी कर सकते हो। अब एनी लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज, तो आपके पास टेक्स्ट आ गया, आपके पास स्पीच भी आ गया, आपके पास ऑडियो डाउनलोड भी आ गया। यू कैन शेयर दिस विद अदर्स, सो वी हैव ऑल दिस प्रोविजंस इन प्लेस। उसके साथ हमने और एक Sir, people are asking where from we can access this tool. हाँ, ये टूल का एक्सेस देंगे आपको, पहला आज देख लीजिए क्योंकि देन यू नीड टू आई मीन यू नो मे बी आवर डायरेक्टर हुएवर ही विल, आप उससे कोऑर्डिनेट कर दीजिए, देन वी विल गिव एक्सेस टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स से अभी एक एग्जांपल लेंगे, कोई टूरिज्म का ले लेंगे। ये देखो इधर बात हो रहा था अलग अलग हिंदी लैंग्वेज में। अब आपको लगा आपको हिंदी नहीं आता, सो ऑल यू डू इज एग्जांपल यू विल पुट इट इन उर्दू। तो उर्दू फीमेल है तो वो देखिए ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया, ये ऑडियो फाइल भी आपके सामने आ जाएगी। मैं यहाँ से एडवेंचर पार्क तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तो दूसरा क्या बोल रहा, क्योंकि ये आप अलग अलग ट्रक से पहला दाएं तरफ ले जा सकते हैं। आप अब इसको आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके इसमें ले लेंगे आप इधर से। నేను ఇక్కడి నుండి అడ్వెంచర్ పార్కుకు ఎలా వెళ్ళగలను? इन्विजिलेटर जो है उसका वेरिफिकेशन वापस से सुबह दिक्कत आ रहा है। सुबह आया था वो ठीक हो गया, फिर से आ रहा है। व्हाट्सएप किया क्या मैंने? సో కోల్ है कि सर మీరు మొదటి దాన్ని స్క్వేర్ నుండి కుడి వైపుకు తరలించవచ్చు. If you see this right, see the beauty of this particular tool is कि आप समझो आपके सामने कोई फ्रेंच में बात कर रहा है, ठीक है ना, एंड देयर इज इंटरेक्टिंग इन फ्रेंच, तो वो फ्रेंच में बोल देंगे। आप क्या करेंगे, आपका खुद का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका लैंग्वेज में आ जाएगा, लेट हिम स्पीक इन फ्रेंच। बट आप आपका उर्दू में बात कर लेंगे तो उसको फ्रेंच में आ जाएगा, आपको उर्दू में आ जाएगा। उसके ऊपर हमने ये भी किया, समझो कोई वीडियो है, सो वीडियो देखिए, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो आई एम टर्निंग ऑन माय कैमरा हियर, बट ये टू वे है ना, लेट अस सी। हेलो, माय नेम इज बुद्धा चंद्रशेखर, सेंड। अब मैंने क्या किया, ये एक वीडियो फाइल बना के ये वीडियो फाइल भेज दिया, बट आई स्पोक इन इंग्लिश, राइट? सो बट सी द फन, सी व्हेन यू रन दिस, ये तो आपको मिल जाएगा हिंदी में। हेलो, माय नेम इज बुद्धा चंद्रशेखर, बट जब आप नीचे लैंग्वेज चेंज कर देंगे, एग्जाम्पल इफ यू पुट इट इन तेलुगु, तो अब क्या होगा, ये वीडियो में ऑडियो पूरा आपको तेलुगु में दिख जाएगा नीचे। హలో, నా పేరు బుద్ధా చంద్రశేఖర్. इससे क्या हुआ साहब, आपका कोई भी वीडियो रहने दीजिए, बट वो वीडियो का आपको कौन सा लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आ जाएगा। अभी मैंने इंग्लिश में बात किया, तेलुगु में नीचे ले लिया ना, अब ये चाइनीज कर देंगे। देखो ये चुम चुम लोगों का चाइनीज,
अब ये चाइनीज लगा दिया मैंने, तो ये पूरा चाइनीज का हो गया. नाउ आई कैन लिसन दिस. 你好，我的名字是佛陀田德拉塞卡。 So ये एक कम्युनिकेट. हेलो हेलो ऑडिबल है सर आप. तो वो भी एक है. अभी नाउ वी आर वर्किंग ऑन द लास्ट थिंग दैट इमेज टू एनी अदर लैंग्वेज इमेज. तो समझिए आपके पास अभी एक बुक है, वो बुक के ऊपर तेलुगु में और उर्दू में लिख के है. अब आप कोई भी स्टूडेंट और फैकल्टी उसके ऊपर स्कैन कर लेंगे वो इमेज को, वो इमेज एज इट इज ऐसा आ जाएगा, बट वो उर्दू हिंदी बन जाएगा. कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज बन जाएगा. अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम चल रहा है अभी. आई मीन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. हमारा सोच ये है कि एग्जैक्टली आपके सामने एक बुक कैसा है विथ कलर फॉन्ट साइज, ऐसा ही दूसरा लैंग्वेज में ऐसा जेरोक्स कॉपी जैसा आ जाए. तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है. दैट आल्सो वी विल ट्राई टू पुश इट इन अ नेक्स्ट लेवल. बट वी हैव अ डीप लर्निंग टूल. एक्चुअली ये सबके पीछे एक डीप लर्निंग टूल है हमारे पास, वो हमने खुद लिखा. वो टूल क्या करेगा साहब, इतना सुपर फास्ट टूल है. वो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे चलते, समझो आपके पास 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, विद इन 12 सेकेंड्स में उसको 12 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके आपके सामने दे देगा. So we will demonstrate that to you now. It's in a deep learning tool. तो आपको सिर्फ ये black वाला दिखेगा पूरा, but you know we will just try to translate one of the two file in Urdu and show it. पहले English वाला दिखाओ. So we are just taking one digital electronics book. वो बुक को ट्रांसलेट करके आपको दिखाएंगे. ये इंग्लिश वर्जन है. ये इंग्लिश वर्जन वाला बुक अभी हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करके वी विल शो इट टू. हिंदी नहीं यार, उर्दू का करो. ओपन करके फर्स्ट देखिए. अभी वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू बोथ इंग्लिश एज वेल एज द उर्दू वर्जन. ये 200 पेज का इसका बुक है. ये बुक देखिए अभी ये पूरा ट्रांसलेट होके विथ फॉर्मेटिंग. आपको आप ऐसा समझो जेरोक्स कॉपी शॉप के पास गया तो वो जेरोक्स दे दिया उर्दू में ये इंग्लिश बुक का, विथ कलर फॉन्ट साइज एवरीथिंग like a Xerox copy. Are you able to see it? Yes. तो ये है हमारा टूल. अभी एक बार मे बी we will give you the access to the tool. I will request director ji to basically send the details. फिर आ गया तो then you can also look into it and play with it. And that we can take things further.
If you have any questions, to ask. Sir, the house is open for the questions. एक्सेस तो आ गई बात, आप लोगों को आ जाएगा. आप लोग ग्रुप में आ गए हैं तो आप लोगों को सी दैट द थिंग इज दैट एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड. यस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वी आर ट्रांसलेटिंग लॉट ऑफ बुक्स एंड लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज आल्सो यूजिंग. सो ये अभी डाटा सेट्स बहुत जोर से पीछे से बन रहा हमारा देश का. सही. तो सर अभी वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड कि इसमें जो है ना अलाइनमेंट का एक सिंपल इशू अगर आप ऐड कर दें सॉफ्टवेयर में ही, तो ये जो बुक में हमको टेक्निकली जो है ना सेंटेंस में डिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा. जस्ट टू अलाइन इट. अलाइनमेंट ऑलरेडी है जी. आई थिंक यू हैवंट ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ये ऑनलाइन पे इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा. वापस 1 second, let me share my screen and show you something. Just give me a minute. Alignment already है इसमें. अब हुआ है, अब हुआ है. You stop sharing ना. I'm telling you, stop sharing. जी सर, सवाल करिए जब तक कोई कर रहे हैं. Hello? 1 second जी. So my question is that which typing pad I have used? Can you please come here? Because he will listen you properly. And another person also. You wanted to ask some question? Those who wanted to ask question, please come forward. Please come forward. Please come one by one, please. Please be seated. Hello. I am audible, sir? It replicates the font size, font type, alignment. Everything is, is registered in this. तो जोर से बोलिए आप. Yeah. My question is that which typing pad I have been used in the tool? Which typing keyboard for Urdu typing? Any built-in keyboard in your tool, or I have used to Indic typing tools or any other tools? Any question related to this? तो आइए माइक पे कीजिए. इस कंप्यूटर स्टक है. हाँ, प्लीज बैठ. इधर आ जाइए, सामने आ जाइए. सर यही प्रॉब्लम है. हाँ, उनका है. सबसे पहले हमारा हुआ. See, meanwhile, to use the time, we are introducing one tool today, but the thing is that there are a number of tools. So, along with us, we have Irfan from Delhi. He was working on a tool of Trados translator. So, if possible, in this session or the session after lunch, he will introduce you how to use Trados. So, we want to make your work of translation easier as much as possible. And those who are not familiar with the technology, please listen. Sometimes it saves your work a lot of work will be saved. I appreciate time in this area. So even if you feel it a burden, bear it with us. So this is the second tool, inshallah, either in this session or session after lunch. Yes, पूछिए सर. Yes, sir.
I am audible. Hello, I am audible, sir. So, in earlier level, apart from this hyperlink translation, so there are a lot of micro level settings. So, what are the guidelines by DTTLP team? For example, the English is only in alphanumeric, only English is ABCD. But in Urdu, we use alphanumeric and alif bata. That also we call in Urdu Mashriqi number and Maghribi numbering system. So, what is the guideline of DTTLP regarding that? Whether we should use the Mashriqi numbering system or the Maghribi numbering system? That's what Only. I mean, no need to go for any Mashriqi number. We follow Maghrib. ABCD only. And if you're using terminologies in between, then you have to use the bracket. You have to use the bracket, and for a term, if it is of 1, 2, or 3 words, you have to use the first word, first alphabet as a capital. So, in alignment, we are. Yes, sir. Due to the network problem, the session has been concluded by Buddha sir. So, what's your question? Your question is ABCD and 1, 2, 3. And another thing I want to add. Suppose there are some scientific word or technical words. Suppose computer is there. If you translate it into Hindi or Sangnak, it will be very difficult for student to understand or grasp. If it is amplifier, it is communication. So there are certain words. These are what which are the standard, which will be the standard in your books. They will be used multiple times, 100 times, 50 times, 60 times. So if you are using computer on first chapter, so please use computer word up in the complete book. It's not like that in two chapters you are using computer, in the next chapter you are translating into Sangnak or something like that. If I go for the word viscosity, if you translate it in Urdu or Hindi, it will be quite difficult for the student to understand. Even the teachers can't understand. So use these scientific or technical words which are very familiar in our local language also, in our technical language also, in our teaching language also, to use the same words. No problem in that. Yes, sir. So that word should be translated or written in English? Written in English, what I am saying. Written in English. If I say viscosity, can you translate it? If you translate it, it will be quite difficult to mug up for the students. Actually क्या होना चाहिए? Actually translation का क्या meaning है कि जो आपकी सरल से सरल भाषा है, simplest, जो आप local language में भी use करते हो, वो इतना फ्लुएंटली होना चाहिए कि उसको एब्सर्ड नहीं लगना चाहिए, उसको कोई हर्डल नहीं लगना चाहिए. जब भी इसका फायदा है ट्रांसलेशन का. टूल्स आपके पास, आपने हार्ड वर्ड भी यूज नहीं करने हैं. उर्दू में आपके भी हार्ड वर्ड यूज हो सकते हैं. शुक्रिया का भी एक अनदर वर्ड हो सकता है, आदाब का भी एक अनदर वर्ड हो सकता है.
तो आपने सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट रखना है। आपने ये रख के सोचना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अगर इसको पढ़ूंगा तो क्या मैं 100% ग्रैस्प कर पाऊंगा? अगर नहीं तो रीट्रांसलेटेड। आपने ट्रांसलेटर का वर्क नहीं करना है। जैसे वीसी सर ने कहा कि थॉट्स एंड आइडियाज हैं, ये सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है कि आपने सिंपल ट्रांसलेशन किया एंड यू पिक अप योर मनी एंड फॉरगेट अबाउट इट। नो, आपने इस तरह से करना है कि आपको अगर आपका बच्चा भी पढ़े, आपकी बहन और भाई भी पढ़े, तो उसको पूरा ग्रास्प कर पाए। जब भी हमारा मोटो फुलफिल हो पाएगा, जो हमारा गोल है जब भी फुलफिल होगा। अदरवाइज तो ट्रांसलेशन टूल्स है, गूगल्स का भी है, उड़ान का भी है, बहुत सारे हैं, वो कर सकते हैं। वीडियोस भी हैं, यूट्यूब्स भी हैं, बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है कि मल्टीपल वीडियोस वो एक टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन हम उनको ऐसी चीज ऐसी चीज दें उनको कि लाइफ लॉन्ग मेमोराइजेशन रहेगा हमारे पास। हम टेबल्स याद करते हैं, पहाड़े जिसको हम बोलते थे, हमें आज तक याद है, क्यों? हमारी वो लोकल लैंग्वेज में थे। करेक्ट। तो हमने इस तरह का ट्रांसलेशन करना है बुक का कि उसको ताउम्र याद रहे। इतना हार्ड वर्ड यूज नहीं करने हैं आपने, जब भी इसका फायदा है। अदरवाइज तो फिर वही है कि पहले ही हम बहुत ही मतलब कि स्लिपरी ग्राउंड पे हैं। आप किसी को कहोगे कि आप उर्दू लैंग्वेज में बुक पढ़िए, कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेगा। हम प्रिविलेज क्लास से बैठे हैं, क्या हम अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। 90% हम कहेंगे नहीं, हम अपने बेटे को इंग्लिश स्टैंडर्ड में पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, उर्दू में हम नहीं लेके जाएंगे। ये सभी लैंग्वेजेस के साथ, नॉट फॉर द उर्दू लैंग्वेज। करेक्ट। तो हम पहले ही उसको स्लिपरी ग्राउंड पे है, तो हमने उसको उसका कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करना है। उसको इस तरह से देना है कि उसको लगे कि हाँ, अगर मैं यूज करूंगा तो मेरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास भी। एक सॉल्यूशन बहुत बढ़िया, हमारी प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन भी हमने दिया और उसने अडॉप्ट किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज था हरियाणा के अंदर, उनके पास हमने फर्स्ट ईयर की हिंदी बुक्स हमने उनको वहाँ पर उनको डिस्ट्रीब्यूट की, तो बच्चों ने नहीं लिया। तो प्रिंसिपल बहुत ही इनिशिएटिव थे, एंथुसियास्टिक थे। उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा कि पहले आप इंग्लिश बुक जो है आप उसका फर्स्ट चैप्टर आप बच्चे को क्लास के अंदर रीड आउट करने के लिए दीजिए। बच्चों ने रीड आउट किया, 30 मिनट्स के लिए आप रीड आउट के लिए दिया। फिर बच्चों से पूछा, फीडबैक लिया कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टैंड। somebody says 70, somebody 60, somebody 30, मैक्सिमम बिलो 50। तब उनको कहा कि हमने सेम बुक सेम चैप्टर आप हिंदी का दीजिए। हिंदी का दिया, उन्होंने पढ़ा, अच्छा, फिर आधे घंटे के लिए पढ़ा। फिर हमने कहा कि उनको आप इंग्लिश का जो चैप्टर था आप उसको पढ़िए। ट्रमेंडस इंक्रीज था, हर कोई 70 to 80% के ऊपर था। तो वो ब्यूटी केस में है, वो हमारी मदर टंग में है। तो उसी ब्यूटी को हमने बरकरार रखना है, उसको खोने नहीं देना है। हम उसको खो रहे हैं, धीरे धीरे हम खो रहे हैं। फिर दूसरी चीज आती है कि ग्लोबली हम कैसे कम्पीट करेंगे। बट नेचुरल है, हमें ग्लोबली कम्पीट करना है, हमें बाहर भी जाना है। हम किसी का रास्ता नहीं रोक सकते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लैंग्वेज। तो इसलिए मैंने कहा कि इंग्लिश जो वर्ड्स है आप उसको यूज करना ही करना है। तो आप उसको इस तरह से कीजिए कि खुद भी वो। दूसरी चीज, अगर आप भी सभी एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, स्टील्ड हैं, अगर आप एक बच्चे को कहो कि आप एक सेमिनार दीजिए प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज और सम अदर, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, तो बच्चा फटाफट करके चला जाएगा, उस मगअप करेगा, रट के आएगा और आपको बोल के चला जाएगा। अगर आप उसको कहो कि आप बाइलैंग्वेज में दीजिए, इंग्लिश प्लस उर्दू, उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि पहले वो स्टूडेंट था वो टीचर की तरह बात कर रहा है, उसकी जितनी भी नॉलेज है उसको एग्जिबिट कर रहा है, आपके सामने रख रहा है। तो उससे क्या पता लगता है कि उसके पास है आइडियाज हैं, उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो डरता है, फियर ऑफ लैंग्वेज है उसके पास, क्योंकि एफिशिएंट नहीं है उसके अंदर, इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है उसकी लैंग्वेज में। तो हमने बाइलैंग्वेज को यूज करते हुए उसके जो अंदर नॉलेज है उसको बाहर निकालना है, या उसके अंदर जो नॉलेज हमने इनकलकेट करनी है कि उसके फ्यूचर के लिए वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो, कि उसको जॉब भी अच्छी मिले, आगे हायर स्टडीज भी करना चाहे, उसमें भी वो इन्फ्लुएंशियल हो, बेनिफिशियल हो। तो हमारा काम सिर्फ ट्रांसलेटर का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि टूल्स बहुत अवेलेबल हैं। AICTE का अपना टूल है, उड़ान का अपना टूल, हम टूल से भी करवा के दे सकते थे मार्केट के अंदर, लेकिन नहीं,
वो जो आइडियाज, जो थॉट्स है, अभी जैसे सर ने कहा कि उर्दू एक क्लरिकल लैंग्वेज है, बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है। मैंने अपने ग्रैंडफादर से, फादर से भी सुनी है। कुछ वर्ड हैं जो गले के यहाँ से आते हैं, जज्बात, जकरिया, इस तरह की चीजें। तो इतना स्वीट लैंग्वेज है, इतना अच्छा लगता है सुनते हुए कानों को, और आप उसको इस तरह से ट्रांसलेट कर देंगे तो वो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। उस चीज को भी हमने मेंटेन रखना है, और जो लोकल लैंग्वेज में हमारे वर्ड्स है उनको हम इनकलकेट करना, इन्वाइट करना है अपनी ट्रांसलेशन। तो इस तरह से बनाना है कि बच्चा पढ़े और उसको इतना अच्छा लगे कि बार बार पढ़े उसको, और एक बार दो बार पढ़ने के बाद उसको लगे कि आई एम परफेक्ट नाउ। उसको हमने परफेक्शन देनी है, उसके जो आइडियाज उसको बाहर निकालना, क्योंकि अब ग्लोबल कॉम्पिटेंसी है, सिर्फ बुक नॉलेज से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत कुछ चीज देना है उसको, हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलपमेंट देनी है उसको, क्रिटिकल थिंकिंग देनी है। अगर हम इंग्लिश में आपसे बात करूं और इंग्लिश में बच्चा नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछा, हमने भी नहीं पूछा। टीचर पूछने लगता था, हम बैक बेंचेस पे चले जाते थे, ऐसा ही होता था क्योंकि हमारे नंबर ही ना आए। लेकिन हम जब हमें हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाता था तो हर कोई हाथ खड़ा कर लेता था। तो इस टाइप का हमने हॉलिस्टिक अप्रोच, इकोसिस्टम हमने क्रिएट करना है एजुकेशन का, कि हर बच्चा कहे कि यस आई एम द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। तो इस तरह की चीजें हमने मतलब कि अपने स्टूडेंट्स के अंदर देनी है। और ये कब होगा? जब सोसाइटी भी हमारे साथ जुड़ेगी। सोसाइटी को हमें बताना पड़ेगा कि हम एक नोबल वर्क, इतना नोबल वर्क हम करने जा रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए। बच्चा एक आप इंग्लिश में पढ़ा दिया किसी के बच्चे पे, सपोज करो मजदूर है या रिक्शा पुलर है या वो बहुत गरीब है या अनएजुकेटेड है, वो नहीं बता पाएगा, वो इंग्लिश में देखेगा, वो साइन भी कर देगा उसकी अवार्ड्स पे या उसकी मार्कशीट के ऊपर। अगर हम उसको उसकी लैंग्वेज में देते हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स की तरफ से भी आएगा। तो एक वर्ग ऐसा है जिसको हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, तो उसको भी हमने नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो एनईपी के अंदर इसलिए इस चीज को रखा गया है, इस चीज का महत्व दिया गया है कि हम पूरी सोसाइटी को साथ लेके चले। और उर्दू लैंग्वेज की तो डिमांड बहुत है, नॉट इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री आल्सो। तो हमें ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि बच्चा कहीं पर भी खड़ा हो, चाहे मानू के अंदर हो, चाहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो, वो कॉन्फिडेंटली कह सके यस आई नो दिस, दिस इज माय आइडिया, आई कैन कॉन्सेप्चुअलाइज दिस आइडिया। तो इस तरह का एनवायरनमेंट हमने अपने ट्रांसलेशन के अंदर रखना है। बहुत बड़ी बात कह गया मैं, सॉरी, लेकिन हमने उस बच्चे को इस तरह से तैयार करना है, क्योंकि हमारा जो देश है सबसे ज्यादा यूथ उसी के पास है। अभी जापान का आपने 4 दिन पहले हमने देखा कि वो जापान देश बूढ़ा होता जा रहा है, बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारा देश सबसे यंगेस्ट कंट्री है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है। लेकिन एक चीज मैं शेयर करूंगा, बहुत ही मतलब कि ठीक नहीं है कि 27 लाख इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स है हमारे, उसमें से 5 लाख स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट है फर्स्ट ईयर। Even in IITs, 5 to 6% dropout. Or language is one of the major reasons. There are so many multiple reasons, but language is the major reason in that. तो उस ड्रॉप आउट को भी हमने मीट आउट करना, उसको कम करना है। सेकेंड, 6.5 लाख अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग यूथ है आज। दिस डाटा वी हैव AICTE. तो 6.5 लाख यूथ, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। वो गैप है हमारा, एकेडमिया इंडस्ट्री का गैप है हमारे बीच में, उस गैप का पूरी हमने ब्रिज करना है। और मदर टंग के अलावा उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। आप इस चीज से वैसे भी एग्री करोगे आप सभी। अब देखिए, मैं हिंदी में आपसे कितना अच्छा बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं कर पाता। एग्रीड और नॉट? माय ओन एग्जाम्पल। तो इस तरह का हमने ट्रांसलेशन देना है कि बच्चे को एक फ्लुएंसी लगे। जैसे मूवी देखते हैं, अगर मूवी हम देख रहे हैं एक सीन के साथ सब चीजें अटैच है तो हमें बड़ा इंटरेस्ट लगता है। अगर उसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी होती है या कुछ गैप आता है तो हम कहते हैं बोर हो गए। तो हमने बच्चे को बोर नहीं करना है, हमने उसका इंटरेस्ट पैदा करना है, जिसका इंटरेस्ट नहीं उसका भी पैदा करना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, हर ट्रांसलेटर को एक बुक दी। हम मल्टीपल ट्रांसलेटर्स भी दे सकते थे,
हमारा काम स्पीडली हो जाता। फाइनेंशियल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंटिन्यूटी, जो फ्लुएंसी एक ट्रांसलेटर दे सकता है पूरी बुक के अंदर, वो दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या दिया है और फिफ्थ चैप्टर में मैं क्या देने वाला हूँ। तो इसलिए हमने मल्टीपल, हमारे पास आइडियाज भी आए कि मल्टीपल ट्रांसलेटर दीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, तो हमारा गोल है वो, हमने गोल अचीव करना है। हमने देश को विश्व गुरु बनाना है, और उसमें आपका ये कदम बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और आप फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हो, तो बट नेचुरल हिस्ट्री में आप लोगों को, MANUU की हिस्ट्री में आपको, उर्दू ट्रांसलेशन में आप लोगों को याद किया जाएगा, और इसके लिए हम एक्नॉलेज भी करेंगे। एक्नॉलेज भी, आपका एक्नॉलेजमेंट जो रहेगा उसमें आप लोगों को डू एक्नॉलेज भी करेंगे कि ट्रांसलेशन इनकी तरफ से आया, कोऑर्डिनेटर कौन थे और कैसे कैसे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ट्रांसलेशन वर्क को आगे बढ़ाया है। थैंक यू सर। क्वेश्चंस कंटिन्यूस। सर थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो लोग मशीन ट्रांसलेशन का के लिए बहुत वेल वर्स नहीं है, तो मतलब ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन। हाँ सर, मैंने वही बताया, ट्रेडिशनल चीज को तो कोई मतलब कि किसी उसको तो वो चैलेंज कर ही नहीं सकता। मशीन तो क्या है कि आपका क्यू है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्यू को कुछ भी बना देगा, लेकिन आपको पता है कि वो कंप्यूटर में यूज हो रही है या इलेक्ट्रिकल में यूज हो रही है। अब बस बार है इलेक्ट्रिकल में बस बार है। अब बस को ट्रांसलेशन क्या बताएगा? सवारियों के बैठने का डब्बा। बार को क्या बताएगा वो? तो जो ट्रेडिशनल है उससे बेस्ट कोई भी नहीं है, लेकिन ये एक हेल्पिंग टूल दिया हमने जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, स्पीडली हो जाए, टाइम कम लगे। सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रांसलेटर्स ऐसे भी हैं जो टेक्नोलॉजी वेल वर्स नहीं है। सर आपने अभी एक किताब ट्रांसलेट की है, 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाएं। सर ने एक पूरी किताब ट्रांसलेट की है और बहुत ही फास्ट ट्रांसलेट की है। बहुत बढ़िया। आपने कोई टाइप नहीं किया है, आपका पूरा तर्जुमा हाथ का है। हमारा ये कहना है कि आप हमको टाइप दें। आप अगर लिख कर रहे हैं तो आपको जो है ना किसी DTP ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिए। तो ये टाइप में मतलब इमेज या वो वर्ड वगैरह करवा के ओनली वर्ड। एक सवाल ये था सर कि जो इंग्लिश टेक्नोलॉजी है उसको एडिटिव रखना है, तो उसका स्क्रिप्ट क्या होगा? इंग्लिश ही में रहेगा या उसको फिर आप लोकल लैंग्वेज में? इंग्लिश में ही रहेगा, जैसे कंप्यूटर CUMPUTER कंप्यूटर की रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा। इस तरह तो बहुत ज्यादा नहीं रखना है, इतना नहीं होगा, इतना नहीं है उसमें, मैंने देखा है इतना नहीं होगा। मतलब कि ज्यादा आपके एक चैप्टर में ज्यादा 10 वर्ड होंगे। अगर 10 चैप्टर हैं या 12 चैप्टर हैं तो 120 या 122 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, इसमें एक चीज की फहीम साहब एक चीज की मैं हेल्प करता हूँ। मानू की पॉलिसी क्या है? मानू ने 1998 में टर्मिनोलॉजी पर वर्कशॉप किया था और द पॉलिसी इज ऑलमोस्ट इन अलाइनमेंट विद दिनेश सर। तो इसमें 2-3 बातें मैं आपको रख रहा हूँ। नंबर 1, जो टर्मिनोलॉजी उर्दू में इवॉल्व है उसको आप यूज करेंगे। अगर वो थोड़ा नॉर्मल फेमिलियर नहीं है तो आप सामने जो है ना उसके ब्रैकेट में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के देंगे। लेकिन टाइम 98 से अब तक बहुत पास हुआ है। फहीम साहब का जो क्वेश्चन था उस बारे में भी है कि अगर कोई टर्मिनोलॉजी उर्दू में फेमिलियर हो चुकी है तो आप कंप्यूटर को कंप्यूटर COMPUTER लिखने की जरूरत नहीं है, आप उर्दू में लिख दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट उर्दू टर्म। वो जिन्नाती इस्तेलाहात, गिग्नेटिक टर्मिनोलॉजीज ना यूज करें जिधर सर ने इशारा किया कि उर्दू की बात कर रहे हैं आप तो उर्दू की कीजिए ना। उर्दू अगर लैंग्वेज है तो उर्दू हिंदी का वर्ड भी लेगी, उर्दू संस्कृत का भी लेगी, उर्दू इंग्लिश का भी लेगी, इंडिक लैंग्वेजेस का भी लेगी। हमारा एटीट्यूड क्या है? हम पर्शियन और अरबिक से लेते हैं वर्ड्स, नॉट इंडिक लैंग्वेजेस। तो वो आप लोग रहिए कि पढ़ने वाले के लिए यहाँ के कल्चर में जो फैमिलियर टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। न्यू टर्मिनोलॉजी अगर आप
कहीं पर इवॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म अस, वरना एडिटर उसको काट देगा। अगर आप कोई न्यू टर्मिनोलॉजी बना रहे हैं तो साइमल्टेनियस आपके कंटेंट के साथ आप लिखें कि हमने ये 10 टर्मिनोलॉजीज को इवॉल्व किया है, हमें चेक करने में। मेरी बात तो है ही नहीं, मेरी बात ये है कि अगर एक सत्र में, उर्दू के एक सत्र में, एक लाइन में 5 इंग्लिश के टर्म आ रहे हैं, 5 इंग्लिश के टर्म को अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे तो पूरी सदर में सिर्फ इंग्लिश की नजर आएगी। तो मेरा ये कहना है, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे कंप्यूटर है, अगर मैं हिंदी में भी कंप्यूटर लिख देता हूँ, इस तरह से आप उर्दू में वैसे लिख दीजिए अगर आपको इसमें ज्यादा आ रहा है तो। और ब्रैकेट में आप एक जगह लिख दीजिए, या फिर नीचे आप जो एक लाइन ड्रा करके चैप्टर के आखिर में बदला आप लिख सकते हो कि इनको मैंने ऐसे यूज किया है, या हर पेज के नीचे आप उसको यूज कर सकते हो कि ये चीज मैंने यूज की है। हाँ, मेन चीज क्या है कि जो बैक बेंचर है, जो फ्रंट बेंचर है, दोनों को समझ में आना चाहिए। दैट्स नहीं, इसमें भी एक चीज फहीम साहब जो बोल रहे हैं ना, रिपीटेबिलिटी में आदमी बोर हो जाता है। एक पेज पर अगर कंप्यूटर 5 जगह आया है तो हर जगह 2-2 आप नहीं लिख पाएंगे, एक ही जगह लिख। एक मैं ये कह रहा हूँ कि एक पैराग्राफ में 5 अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज है, 10 टर्मिनोलॉजीज रह सकते हैं साइंस की किताब में। तो सबके सब अगर पूरे इंग्लिश में लिखे जाएंगे तो वो आपको जो मैं सिर्फ इंग्लिश का नहीं बोल रहा ना फहीम साहब, आप उर्दू के साथ ब्रैकेट में दीजिए ना। नहीं, इंडेक्स में यूज करने के बावजूद रवानी लाने के लिए फहीम साहब का क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट को जो है ना हम सस्टेन करें, और वी एग्री विद दैट कि आप उर्दू लिखें ब्रैकेट दें, उर्दू लिखें ब्रैकेट दें, सिर्फ इंग्लिश ना लिखें, जिससे जो है ना आपको लैंग्वेज के लिए एक बार कंप्यूटर आया, एक बार आपने इंग्लिश में ब्रैकेट में लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है उस पेज के ऊपर, उस पेज पे, क्योंकि वो बहुत बदला लिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सूदिंग नहीं रहेगा। आई सूदिंग भी तो चाहिए। सर देखिए, दोपहर में हमारा एक सेशन फहीम साहब और डॉक्टर असलम परवेज साहब की निगरानी में हो रहा है, वहां यही चीज प्रैक्टिकली देखेंगे आप कि हम तो टर्मिनोलॉजीज की बात ही कर रहे हैं। यस मैम। हाँ, जैसे वही मैंने कहा ना, जैसे हिंदी में ही लिख दिया। भाई पूरे पॉलिसीज में सब पॉसिबल है, आप तर्जुमा है तो यूज करेंगे, नहीं है आसानी से कर। एक मिनट, आप तर्जुमा अगर किसी टर्मिनोलॉजी का है तो आप यूज करेंगे, अगर तर्जुमा नहीं करना है, अडॉप्ट करना है तो अडॉप्ट करेंगे पूरी टर्मिनोलॉजी को, अगर उर्दूआइज करना है तो उर्दूआइज करेंगे। इसके जो रूल्स हैं वो रूल्स में फिट होने वाला काम करें आप। नहीं, बाउंड्री क्लियर हो ही नहीं सकती, नहीं करना, नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी बुक, क्योंकि क्या है, कंटेंट्स अलग अलग हैं। इंग्लिश के जो कंटेंट्स हैं एक बुक के अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो ऐसी बुक आ जाएगी वो मतलब कि मन नहीं होगी। करेक्ट। हमने क्या किसको ध्यान में रखना है, स्टूडेंट को। दैट्स ऑल। तो आप जब इसको ध्यान में रखोगे आप, तो अपने आप सारी चीजें सर्कुलेट कर देंगे हम लोग। आप लोगों को अभी हमने ग्रुप में ऐड किया है, पहली दफा ग्रुप बन रहा है, इसमें जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, ट्रांसलेटर रजिस्टर्ड है हमारे पास, प्लीज आप यहाँ पे मुझे बता दें, हम आपको ऐड कर देंगे। तो ग्रुप में ऐड करने की वजह यही है कि वो जो उर्दू से रिलेटेड पॉलिसीज है हम आप तक पहुंचाएं, आपके क्वेरीज को सुने और आपको फैसिलिटेट करें। लिंक भी शेयर किया जाएगा ग्रुप में, तो दोज हु आर नॉट एनरोल, अभी तक जिनका ग्रुप में नहीं आया है वो प्लीज हमें बताएं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जो आपकी बुक्स रहेगी। हाँ, प्लीज। Sir, my question is for the entire AICTE regarding this program of translation. I have observed, and it is true also since I do work in Delhi, I have observed that people coming from Hindi background, they get, face a lot of difficulty in getting place because MNCs generally prefer English-speaking guys, right? So, if you go for example, English to Urdu, then teach students in Urdu language, engineering in Urdu, or medicine in Urdu. So I believe that employability is bound to get increased, right? So outside India, I don't think they will get any grant. So how is AICTE going to address that problem? मैं बताना चाहूँगा आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। IIT बॉम्बे जो आपका मुंबई जो है, उन्होंने एक
बहुत बड़ी MNC है पूना के अंदर, न्यूज़पेपर पे गया था। तो उन्होंने उनको अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो टीम थी उनको भेजा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस इंस्टीट्यूशन से एक भी बच्चा सिलेक्टेड नहीं है। तो जो उनके हेड ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट थे ही वाज सरप्राइज कि हर बार हम 15-20 बच्चे लेके आते थे उनको, अब की बार एक भी कैसा नहीं है। तो वो खुद गए, उन्होंने उनसे पूछा, फीडबैक ली कि आपने कैसे 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 किया, तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स का डाटा बैंक जो था डाटा लिया, उसको एनालिसिस किया, उसके बाद वो एक 10-12 लोगों की टीम लेके कर गए और फिर 15-20 लोगों को सिलेक्ट करके आए। वो कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने क्या किया, जो आपने कहा कि इंग्लिश के अंदर वो पूछ रहे थे, बच्चे फ्लुएंट नहीं थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि बच्चे अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को वो लेकर के गए, और उन लैंग्वेजेस जो जैसे कोई मराठी बच्चा था, कोई बंगाली बच्चा था, उनसे उनकी लैंग्वेज में बाइलैंग्वेज क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका जवाब पहले से बेहतर था और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो इसलिए हमने कहा कि हमने किसी को हिंड्रेंसेस क्रिएट नहीं करके किसी को हमने अवॉइड नहीं करना है। इंग्लिश साथ चलेगा लेकिन उर्दू भी रहेगा। I think it should not be at the cost of English. So, sir, I think I shall reply it. Localization along with globalization. We don't want to ignore the aspect of localization, and we don't want to just go away from the global इसका जो perspective. सॉल्यूशन है NEP के अंदर आप देखेंगे 5+3+3+4। जब आप 4 के ऊपर आते हो, लास्ट 4 के ऊपर आते हो, तो फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश साथ साथ रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। सेकेंड ईयर के अंदर जो डिप्लोमा प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज भी है, वही कंपलसरी है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो NEP ने भी ध्यान में रखा है और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। और जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हो, आपको बैचलर डिग्री दी जाती है, फोर्थ में आते हो तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च दी जाती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर इनकलकेटेड है, उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने अपने यहाँ बिजनेस करना है उसको चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जापान फाउंडेशन का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जापान एम्बेसी की तरफ से जापान फाउंडेशन है जो जापानीज कोर्स करवाती है। उसने क्या किया कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटेक्निक्स है उनके साथ MOU साइन किया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मंथ्स की रिगरस ट्रेनिंग जापानीज लैंग्वेज में देते हैं और उसको फंडेड भी वही करते हैं, उनका खुद का ट्यूटर आता है। फिर उनका जो असेसमेंट है वो जापानीज जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो खुद आते हैं, वो जापानीज भाषा में ही उनका टेस्ट लेते हैं, वाइवा लेते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं और वो सर्टिफिकेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द होल ऑफ द लाइफ है। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जापानीज भाषा में अपना देते हैं, जैसे चाइना है, जापान है, जर्मन है, उनके क्लस्टर्स है, बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स है, जापानीज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, उनके साथ वो अटैच करते हैं एम्प्लॉय देके उनको कि जो जापानीज जो इंजीनियर है उनका उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हमें इतनी इंग्लिश आती है कि हम अपना काम चला सकते हैं। साथ में उसको एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ कि जापानीज लैंग्वेज आ गई। तो जो ग्रोथ बच्चे की 1 या 2 साल 10 साल में होनी थी, वो ग्रोथ बच्चे की 5 साल में हो जाएगी जापानीज लैंग्वेज सीखने। तो इस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो हर कंट्री ऐसा कुछ ना कुछ कर ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख रहे, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी पैरेलली उसके साथ चल रही है। मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी सर। पहली साल जो सवाल उठाया वो बहुत अहम बात है, क्योंकि मैंने हिंदी में बहुत सी किताबें लिखी तर्जुमे। जब मैं यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में था तो पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की, वेरियस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, और हिंदी में काफी सारी किताबें होती थी। लेकिन जब हमने देखता था तो बहुत रेयर कई सफ़े के बाद कोई एक देसी और उसमें प्रवासी के तौर पर पैदा करता है। इसका मतलब पहले जो टेक्नोलॉजी आती नहीं होती, लेकिन वो उसके लिए हिंदी जो लफ्ज़ है या जो टर्म है वो उसको लिखते थे। मुझे लगता है कि पॉपुलर जो टेक्नोलॉजी उसको आप छोड़ दीजिए कि कंप्यूटर है या जैसे और है या कुछ है, लेकिन वैसे जब किताब को तैयार होगी तो जितने भी टर्म जाहिर है कि उनका जो सब्स्टिट्यूट होगा उस लैंग्वेज में कोई मात्रा रखना सब्स्टिट्यूट ऐसा कोई जानना चाहता है तो वो इंग्लिश टेस्ट की मदद ले सकता है। इंग्लिश स्टेट में बच्चों को खुद इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड भी कर सकते हैं। किताब उर्दू की हो, तर्जुमा शुदा किताब हो, और साथ में जिस किताब का वो तर्जुमा हो उसे प्रोवाइड कर दी ताकि वो दोनों को देख ले। लेकिन जाहिर है अगर हम क्लास के आगे ब्रैकेट में उसके अंग्रेजी वो लिखेंगे तो वो भी अजीब सी बात होती है। वो हमारी लैंग्वेज यानी किसी भी लैंग्वेज को जिसमें तर्जुमा करना है उसे कोई खास फायदा उससे नहीं।
फुली एग्रीड सर। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ट्रेन है या रेल है, अगर आप उसको हिंदी वर्ड लेके चलेंगे, ट्रेन को हम रेल लिखते हैं, अगर प्योर हिंदी पे जाएंगे तो लोह पथगामिनी बन जाता है, ये बच्चों के कभी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह की चीजें हमने अवॉइड करनी है, मेरा कहने का मतलब ये था, तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल कंप्यूटर का आपको दिया था। यस सर। Sir, I have a suggestion. Yes, please, sir. Because these books, myself is Rashi Dharma. I have just technical background, involving for machine translations. So the translation from English to Indian language is hard as compared to translation from Hindi to other Indian languages. Because this already Government of India has conceptualized 5 years back for the project for Indian language to Indian machine translation, and that project is available for community use. Because these books are translated in many languages, if the book is already available in Hindi, and that Hindi is also available to the translator, it is very great help to the translator to translate it into Urdu. So my point is that if the Hindi translation is available of those languages, if that can be shared to the translator, it will be a great help and expedite the process. Right, sir. But I have explained to you earlier, these books which AICTE has procured from the renowned authors from IIT and MANUU. These are the model based on the model curriculum, and these are the standard books which AICTE has suggested to all the technical institutions. So that's why these are only available in English, and these are the outcome based. You have seen the mapping also. Yes. Program outcome, unit outcome, and all these things. ये थोड़ा सा जो जर्नल बुक्स है उनसे हटके है, और आप अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन एनबीए एक्रीडिटेशन करवा रहा होगा, उसको भी पता होगा कि प्रोग्राम आउटकम से और इनकी मैपिंग कैसे करते हैं। तो हर चैप्टर का जो छोटा सा टॉपिक भी है, उसकी प्रोग्राम आउटकम के साथ, कोर्स आउटकम के साथ मैपिंग है कि व्हाट इज एम्पलीफायर, तो उसकी प्रोग्राम वो कहीं ना कहीं मैप है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी लिख दिया है, तो उसमें हमने काफी रिग्रेस और मेटाप्लसली हमने वो प्रिक्योर की है बुक्स को, और उसके ऊपर कम्प्लीटली हमने वर्क किया है और रिव्यू भी हमने खूब किया है, और बेस्ट बुक्स हमने आपको देने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा भी कर सकते थे, बुक्स अगर हम प्रिक्योर करने के अलावा जो अच्छे ऑथर्स थे उनकी बुक्स को लेके आपको दे देते हैं, लेकिन वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। ठीक है, करेक्ट। अब जैसे टाटा मैकग्रायल की बुक्स है या वो किसी भी रिनाउंड ऑथर की बुक्स है, दे आर रेडी टू वर्क विद AICTE, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने इंडियन ऑथर से, पब्लिशर्स के साथ जो भी NEP के तहत और प्रोग्राम आउटकम के तहत बेस्ट बुक्स हमने प्रिक्योर करने की कोशिश की है, और आपको ओके सर, अभी तो टाइम हमारा खत्म हो रहा है। हमारे दरमियान सर अभी जो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, जरा 1 मिनट के लिए खड़े जाए सर। ये IIIT से हैं, और ये चौथा टूल है जो हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ संपर्क के नाम से हमने जो IIIT में उसके LTRC से हमने डेवलप किया था, और मानू भी उसका एक पार्ट रहा है। तो ये पार्टिसिपेंट्स के लिए बड़ा ही जो ना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर कुछ डेवलपर्स भी हैं, कुछ यूजर्स हैं। आप वैरायटी ऑफ टूल्स को यूज करें, लेकिन जो बात सर ने कही है वो सही है कि AICTE की जो टूल है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ है जो हमारी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है सर। और ऐसा है सर, अभी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं AICTE की तरफ से आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप ऑथर्स भी बनिए। श्योर श्योर ऑथर्स भी बनिए, और आपको पता भी रहेगा। हाँ, सही हो चुका है सर, बैठ जाए। सो फहीम साहब का कहना सही है कि लंच के बाद के लिए भी कुछ रखें। यहाँ हम लोगों ने लंच का इंतजाम किया है, और इनाग्रल सेशन में तो हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस वक्त जो मौजूद ऑडियंस है उनको हम चाहते हैं कि आप लोग सभी जो है यहाँ से हमारे गेस्ट हाउस की तरफ आए। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, वो लोग बाई वॉक जा सकते हैं या अपने व्हीकल से। अलबत्ता जो रजिस्टर्ड हमारे ट्रांसलेटर्स हैं उनके लिए बस बाहर इंतजार कर रही है। तो ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसके बाद के सेशन के लिए हम इंशाल्लाह DTP पे मिलेंगे, बैंक के अपोजिट में हारून खान शेरवानी दक्कन स्टडीज सेंटर पर। यहाँ नहीं होगा, हारून खान शेरवानी दक्कन सेंटर स्टडीज पर हमारा अगला सेशन होगा। और कब से होगा अनाउंस कर दीजिए। ट्रांसलेटर और रिव्यूअर्स के लिए बाहर बस है, बोल दीजिए। हाँ, बोल दिया ना मैंने। ट्रांसलेटर्स और रिव्यूअर्स जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए बस बाहर है।
एग्जैक्टली